हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आवाज़ आ रही है क्लियरली? बहुत टाइम बाद स्ट्रीम आया हूँ। आज कोर्ट केस है। मैं लिटरली फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ आज। पन्ने पे पन्ने भरे गए हैं आज। आप देखो, अगर नहीं बहुत ब्राइट है, छोड़ो। आज बहुत टाइम बाद एक अच्छे केस पे प्रिपरेशन किया है, सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। ठीक है। आई एम अ लिटिल स्ट्रेस्ड अबाउट दिस वन, बट लेट्स सी कैसे चलता है। ठीक है गाइस, विश्वास रखना मेरे पे। एंड let's dive right in. हाँ जी मिस्टर फैसल, आप इनको कर लो। मिस्टर फैसल आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है सर? हाँ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी विराज जी, बताइए। सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। आज बहुत टाइम बाद, आपको पता है फैसल जी, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। आपको पता है क्यों? क्यों नर्वस है एडीए सर? क्योंकि केस डिफेंड हो रहा है। यूजली एज एडीए प्रोसिक्यूशन में होता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आज डिफेंस में हो आप तो नर्वस हो थोड़े। हमारे एविडेंस होते हैं, हमें पता होता है। स्मोक इज फाइन, लाइटर नहीं है ना। आज वी आर ऑन द बैक फुट। पता नहीं कौन सा उंगली फेंक दे सामने से। सर वी शुड नॉट बी ऑन द बैक फुट, वी शुड बी ऑन द फ्रंट फुट व्हाइल डिफेंडिंग, नो प्रॉब्लम। चलेगा सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। कम दिस साइड आते रहो। जाओ। ओहो, सफाई है। कैसे हैं? कैसे? अरे बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप भी इस केस में इन्वॉल्व है, मैंने सुना। हाँ जी, दोस्त है ट्रेवियन और मेरे सामने हुई थी कुछ चीजें सब। अच्छा अच्छा। और फैजल I am Yes, yes, yes. representing the opposite side sadly today. हाँ सर, पहला No, it's all right. It's your job, sir. It's okay. दिक्कतें हो रही है, एक बार मैं नैप लेके Best of Yeah. luck. Thank you. और अंगद जी क्या हाल है आपके? बढ़िया अंगद जी, आप कैसे? पत्थर दिल ऑफिसर, आई मीन रॉक स्मिथ ऑफिसर। हाँ हाँ बताए, वो तो बचपन से हैं। क्या क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं। अंगद जी आपको हमने मीटिंग में याद किया था, आप शायद से बिजी तो। अरे हाँ, वो मीटिंग में नहीं आ पाए हम, बट जी जी जी। आई गेस आपने संभाल लिया। नहीं संभल गया। वो कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस हुए ना, तो अभी नेक्स्ट टाइम सबको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो एक आई थिंक मिनट्स बना दूंगा मैं उस मीटिंग के। मैं चेक कर लूंगा। हाँ तो आप एक बार देख लेना और मैं पीडीएफ में भी फॉरवर्ड कर दूंगा। नए चार्जेस आ रहे हैं कुछ। बढ़िया बढ़िया, लव इट जी। हमारा कैप्टन कैसा हो? Good to see you after a long time. रॉबर्ट सर बोलेंगे नारे लगेंगे। ईडी के पास, बट आई थिंक अच्छा, तब हम मिले नहीं। कोई बात अपनी नई गाड़ी अभी नहीं, जीतने के बाद रॉबर्ट सर के। वैसे आपकी गाड़ी वो रेड कलर की है, जहाँ तक मुझे पता है। उसके दोनों दरवाजे गायब है। आई थिंक यू शुड गेट इट रिपेयर्ड। तभी तो मैं बोल रहा कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात ही नहीं आएगी। हाँ। कर देता। नहीं, शायद से आपके वहाँ पे चोट लगी हुई है क्या सर पे? रुको मैं फोटो भेजूं।
एक सेकंड जा रहा मैडम, कैन आई इंटरप्ट? फास्ट रिपेयर फास्ट रिपेयर क्या होता है भाई? ये कर कर देता देंगे। जारा तुम क्यों कर रही हो? केस के पीछे भाग के रिपेयर कर। केस चालू है। कर देंगे वो इनका अंगद जी आप है? चल रहा है। हाँ जी हाँ जी ये अंगद जी है? जी 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 हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अंगद सर बरोबर बात है, हम काफी समझे टाइम से आपको दिखते नहीं। अर्जेंट है, पर ये फास्ट रिपेयर क्या होता है? फटाफट रिपेयर। दरवाजे लगाने में टाइम लगता है। दरवाजे हम लग रहे इंसान है हैं। सर, रोबोट थोड़ी है। अरे सारा जी तो एकदम फुल फास्ट करते हैं, लव इट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा सामने से क्या बात है, तुम आपकी गाड़ी है ये? ले ली नहीं? हाँ जी हाँ जी। कैसी लगी आपको? क्या बात है, पैसे वाले तो हैं आप। अरे कस्टमाइज भी तो कराए। मेरी भी यही है, देखो। क्या नाम है सर? अरे अरे आओ, मतलब इसमें मतलब क्या आओ। प्रॉब्लम लगी मेरे को, ये जो क्या आवाज? ऊपर है ना, नहीं नहीं जो आवाज तो एकदम फाड़ है यार, आवाज तो बेस्ट पार्ट क्या है। ऊपर? ऊपर क्या हुड? ऊपर जो ऊपर का ब्लैक है ना, ये ब्लू नहीं हो रहा यार, मेरे को ब्लू करना है। अच्छा, वो नहीं होगा, वो ऐसे ही आएगा। मेरा भी देखो ना, ये देखो, ये देखो। एक बार नंबर प्लेट पे नजर मारो। अरे मेरे को वेरी मैं भी very ये करा good. तो आपके पास आके नंबर प्लेट बनवाता हूँ। नंबर प्लेट आपको एयरपोर्ट से अंगद भाई, मिलेगी। हाँ हाँ अंगद सर, लेके आके बनवाता। हाँ जी आपकी बताइए। वेहिकल बताओ। जी, जी। एक नजर 13 में भी प्यार होता है। कार्ड प्रॉब्लम क्या ना, ऊपर वाला कार्बन फाइबर है। कार्ड किया कि क्या किया? कैश किया? ठीक है चलो। तो बातों में भी अरे बिल कर लेना। हाँ भाई बोलो। मैंने सुना है। आप सफाई करते किससे? हो गया। ठीक है बिल कर दिया उन्होंने। मैं भाग- हाँ हाँ कपड़े मैंने साफ बोल करता दिया है, था लेकिन उनको। इमरजेंसी में कभी जीप से भी साफ नहीं करता। चलो केस में ही जा रहा हूँ सारा जी मैं। एक सेकंड बैठना नहीं हाँ नहीं मैं नहीं बैठ रहा, मैं नहीं। जरा साउंड बढ़ा, मैंने अपना बढ़ा दिया, मैंने वो कम करके अपना बढ़ा दिया। टेंशन ये देखो ज़रा एक सेकंड रुक। नहीं मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा 5 मिनट में आता हूँ दोनों, ठीक है? ठीक है ये लो थैंक यू सारा जी। जी हाँ इसका मतलब क्या होता है? गाड़ी देखो रेड एंड ब्लू तो है। लगा दूं, बैठ गया तो प्रॉब्लम। फिर गलती हो। शी। डिस्टर्बेंस से बात कुछ बात होगी। अरे सर रुके सर। हाँ जी बोलिए। It will have to be fresh before you come inside. फिर भी हमको करना पड़ेगा ना सर, आपका प्रोटोकॉल विल हैव टू डू इट। दैट्स फाइन विद यू सर। ऑफिसर है शायद नहीं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, एडीए। अच्छा एडीए सर हैं। अरे एडीए सर नमस्ते। जस्ट प्रोटोकॉल सर एक बार। हाँ कर दीजिए। ऊपर फ्रेश कर देंगे। कर लीजिए बिल्कुल कर लीजिए। नहीं तो कुछ सीन हो गया, प्रोसिक्यूशन बोलेगा ये इन्होंने ही किया है करेंगे। हेलो ऑफ ड्यूटी जाना पड़ता है क्या? There's nothing suspicious sir, you can go inside. Thank you so much sir for cooperating. अरे मतलब जजमेंट कैसी देते हैं? उल्टा लटके देते हैं। अच्छा उल्टा लटका देते हैं। राणा सर कैसे कैसे हो राणा सर? जज के नाम सुनने के बाद हिल गई है अंदर से। कौन है जज? बीसी बेंजामिन कूपर। अच्छा बेंजामिन सर। मतलब शेरशाह तुम 10-7 हो? वैसे बोलता है बेंजामिन तो एक ही था 10-7 हो? आपने तो बोला गीतम सर की जगह। शेरशाह 10-7 हो? आ गया। ऑफ ड्यूटी जो क्या हो जाओ। कोर्ट केस ड्यूटी होना पड़ेगा ऐसा? ड्यूटी नहीं कर रहे हो आप। अगर कुछ प्रैक्टिकल आएगी तो मैं चला जाऊंगा। हटा बे टफली दिख रहा है। 10-8 रहो, 10-7 का कॉल मत करो, 10-8 रहो। अभी तो मस्त प्रिपेयर करेंगे। तुम इधर कैसे? जॉब नहीं है। विटनेस यार।
अंगद सर, हाँ जी बताइए। इधर आइए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इधर आइए। आपकी इंग्लिश अच्छी है ना? हाँ बताइए। हाँ, वोट के टाइम उन्हें जरा इंग्लिश में गाइड कर दीजिए, हमारी इंग्लिश थोड़ी खराब है। क्या गाइड करना बताइए। मत गाइड नहीं, ओथ के टाइम आप ये कर दीजिए थोड़ा इंग्लिश में। नहीं छोड़ते। ये उनको बस टेक द ओथ बोलना है, उन्होंने बोलना व्हाटएवर आई से विल बी द सर आप ट्रूथ कर नथिंग बट दीजिए द ट्रूथ। प्लीज प्लीज, मेरी इंग्लिश बहुत कटी हे है। ट्रेवॉन। Hello, sir. Hi, I'm Angad Rathore, the Hi. Assistant District Attorney. Mm-hmm. I will be defending the police department of this one. Okay. Perfect. Whenever you're called on the stand, you need to take an oath. The oath will go like this: whatever I say, it will be the truth, nothing but the truth. Okay. I swear, whatever I say will be the truth, nothing but the truth. Okay. Perfect. I will do that. Yes. You'll remember that? Can you repeat it? I swear, whatever I say will be the truth, nothing but the truth. Okay, I swear what I say is the truth and nothing but the truth. Yes. Perfect. Thank you. Okay. Mike. माइक इधर आओ। हाँ जी अभी चालू का बिरादर वहाँ बैठा है, देख चल। देख भाई शायद फट जाऊंगा मैं, देख रहा। हाँ भाई माइक। मैं नहीं हूँ भाई, मेरे को कुछ पता नहीं है। माइक, मुझे पता लगा तुमने रेजिग्नेशन दे दिया। I have surrendered my license as a private attorney. क्या हो गया? बस अब पीडी वालों को हर चीज में चीजें गलत डायरेक्शन में ले जानी है, तो भाई एक पॉइंट के बाद बंदा गिव अप कर ही देता है। यार माइक, we've gone opposite on many things. I'll be honest with you, एक चीज मैं तुम्हें आज बताऊंगा। प्रोफेशनली चाहे हमारी जितनी नोकझोंक हो, प्रोफेशनली चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो, ऑन अ पर्सनल लेवल मैं बिलीव करता हूँ कि तुम हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छे लॉयर हो, एक नॉलेजेबल एसेट हो। I wouldn't want to lose such a great asset from our department. प्रोफेशनली देखो, हमारा काम है तुम्हारे अगेंस्ट जाना है, क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करना, ठीक है, बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई फील यू आर अ ग्रेट एसेट टू। देखो माइक, पब्लिक डिफेंडर बन जाओ अगर इतना ही प्रॉब्लम दे रही है, प्राइवेट में नहीं हो रहा है। नहीं गवर्नमेंट साइड में तो फिर चलिए जज आ गए अंगद जी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गाली गलौज से मैं बहुत नफरत करता हूँ। किसी एक केस का सहारा लेके, किसी टॉपिक का सहारा लेके मुझे जो चीज की गई, वो चीज आई डोंट थिंक कि सही है। अगर मैं न्यूयॉर्क में होता, मैं उस ऑफिसर को कोर्ट में चीर फाड़ के रख देता। आप भी जानते हो कि मैं कह रहा हूँ इमोशनली तुम ये इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, एक बार सोच लो। मैं दिए और जिससे बात कर लूँ, सोच लो। मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस चीज को, इसलिए मैंने सबसे बड़ी चीज ये करी कि क्योंकि इस केस में मैं इनिशियली विंसेंजो को हेल्प कर रहा था। आई वुड नॉट टैंक हिज केस इन एनी केस, क्योंकि उस बंदे की कोई गलती नहीं है। तो इफ यू गाइस अलाउ एज अ पैरालीगल, आई वुड वांट टू बी हिज सेकंड चेयर। इफ यू गाइस अलाउ, देन इन दैट केस, इन हुज केस? या एट दिस ट्रेवन केस। नहीं अभी तो नहीं, बैठ चुके हैं, ये बन चुके हैं, जज आ चुके हैं, सब हो चुके हैं, तो बहुत लेट हो गया। अरे एज अ पैरालीगल आई एम स्टिल अ पैरालीगल, राइट? आई हैव सरेंडर्ड माय लाइसेंस एज अ प्राइवेट अटॉर्नी। तो पैरालीगल तो सेकंड चेयर होता ही है। किसका सेकंड चेयर? विंसेंजो का। ये हैं जो आपकी साइड में खड़े हैं, सुबह से मीटिंग्स ले रहे हैं। अच्छा ओके। हाँ वही, अभी वापस चेंज नहीं होएगा, तब से ये बन के घूम रहे हैं उनके सेकंड चेयर। ओके तो मैं गॉट इट। कुछ आने का देना पड़ेगा। मेरा भी सेकंड चेयर वन थिंग नहीं, वो देखा मैंने इसलिए दे भाई, दे दिया मैंने। अगर ये 39 अपॉलजीज वो माइक्रोस से बात कर रहा था मैं, बैठ था। No issues, no. थोड़ा उधर हो। Judge, everyone is like present now. All right. Can we please begin with the opening statement? तो आप सब लोग भी बैठ जाइए पीछे, खड़े बंद रहिए. Before we begin, sorry to disturb, but वो Faisal I think had a head pop, so could we just wait for 5 minutes? वो वापस I mean, he's a witness, right? तो ठीक है sir, okay, sorry sir. एटके सर आपका आवाज ठीक नहीं आ रही है। to please put their phone on flight mode. बैठना है मुझे। Yeah. आ रही। Okay, so Your Honor, should I begin? Sir.
Okay. Ladies and gentlemen of the coup, today we gather here to address a fundamental pillar of our democracy, the right to free speech enriched in the First Amendment Constitution. The case before us revolves around an incident where my client dared to express his opinion in a crowded place only to find himself silenced by the very hand tasked to uphold our liberties. In the great tradition of our nation, the exchange of ideas, even controversial one, lies at the heart of our democracy. We will demonstrate that that statement of my client was made indeed an opinion, a personal judgment grounded in the beliefs rather than any malicious falsehood. As such, it falls fairly within the protection of First Amendment. Today, we ask for a ruling that upholds the sanctity of the First Amendment, protecting the right of every citizen to express their opinion freely and without any fear. Mentions of phone check कर. Messages. Good evening, everyone. Honorable prosecution mentioned some very, very important points about the First Amendment and free speech mentioned in our Constitution. Before I go towards those, I will break down the charges levied by the prosecution over the defendants, that is the police department. The first charge they have said is wrongful prosecution. Honorable Judge, by definition, prosecution in criminal law is to initiate criminal proceedings against a person. Such actions are initiated by a prosecuting attorney, example, Mr. DA sitting over here, or an assistant district attorney, or any federal attorney representing a state. In this case, no such prosecution has taken place. In fact, there is no arrest booked in our systems. There was no jail time. There were no charges levied. The only thing which had happened was a warning extending to a detention. The second thing which has been stated is violation of the First Amendment. Clearly, I hope that there was no breach of, free speech, because there are certain exceptions to the First Amendment. First is speech is prohibited when it causes the breach of peace and can lead to violence. In this case, Mr. Trevon was found to be overly aggressive in the situation. Moving on, there were use of illegal words, fighting words. So, one thing also you would like for this case to establish during these proceedings is to add exceptions in the First Amendment to speech which advocates illegal action, leads to violence, commercial speech at a public place, and obscenity. Moving on, the third charge levied over here is that of defamation. Again, there is no tangible evidence which has been shared by the prosecution which says there are damages to the client, to their client, or to prove defamation there needs to be a false statement, which has not been the case. Over the proceedings, we will establish that the police department did not do anything wrong, and all of the above charges levied upon the police department are just to gain fame in the city. Thank you. Your Honor, I would like to call my first witness, which is Mr. Trevon James. Sure, Trevon, you can proceed to the left. Stand up. To my left, my left. उनका माइक ऑन करवा दूं.
टफ है गाइस, टफ है, मुश्किल है। जितना भी बोले पता नहीं इफेक्ट करेगा कि नहीं। Mr. Travan, please turn on your mic from there. Hello? Yeah, we can hear you. Hello, Nachiket. Oh, okay. Can you take him under oath, Vincenzo? Okay, Travan, repeat after me. Yes. I, your name. I, Trayvon James, Swears on the city's constitution swears on the city constitution that I will speak Face cam case में truth. that I will speak truth. Your voice. Can you please repeat? I will केस speak ये on है your truth. नचिकेत That I भाई, will speak truth ये जो बंदा है And जो nothing beside विटनेस truth. पे है, and nothing इसने बोला besides the है truth. कि पुलिस ने रॉन्गफुल Okay. अरेस्ट किया है जबकि कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, Okay, so उसने Mr. एडेड James, डेफेमेशन और वो can सब you डाला है। account of the incident? Yes, I can. What pretty much happened was I was at the city hall and I stated my opinion against the Captain Robert Wilson, and I told him that I feel like he was siding with Mr. Tackrat नचिकेत बता, in तो this मेरे को case, सुनना पड़ेगा वो क्या बोल रहा है। and that in my opinion he was a corrupt cop. Okay, so before like you made this opinion, was there any incident which led you to be on this opinion? Yes. Can you please explain that in detail? Yes, what happened was I was assaulted by Mr. Tackrat, and I went to the officer for that. I believe that was Officer Faisal at the time, and I explained my situation. And apparently, Mr. Tackrat went also to another officer, in this case, Robert Wilson, and told that I assaulted him. Well, in that case, the officer didn't really know what to do, I guess, or he gave us both a verbal warning. He said, "Do not do it again." I replied, "Okay," and I told him that if Mr. Tackrat does such thing ever again, that I will take him to court for that. And then he got up into my face with all the officers standing around us and said, "Yeah, I will show you, man. I will show you," in a very threatening manner. And the cop didn't really respond to that or did anything about it. Well, I told him earlier that I feel very uncomfortable if he comes really close to me, and which he did. So, and that's what happened. And that's why I gave my opinion regarding that. That I felt that he was siding with Mr. Tackrat as he let Mr. Tackrat go. He didn't tell him anything, and he was not worrying about him. He didn't say, "Come close to Mr. Trayvon James." That's हेलो, the अरे case. मैं कैसे हो? Okay, did you feel that Officer Robert Wilson adequately addressed your concern and took appropriate action regarding your report, which you reported? Did you say Faisal? No, Officer Robert. Officer Robert? No, I felt like he was really siding with Mr. Tackrat. And the reason for that was he was very attacking towards me instead of being in the middle. I felt like he was choosing a side. And why I explained that to him, that I felt like he was choosing a side, he said, "You can file a report against me if you would like." And then I said, "Okay, so who's the highest in rank? Like, who's your chief?" And then he showed me his badge, which said Captain Robert Wilson. And he said, "I'm the highest in charge." So I told him, "So how am I going to file a charge against you if you're the highest?" And then I said, "In my opinion, you're a corrupt cop." So that was the leading up towards the reason. Okay. Did any point of time Mr. Robert asked you to file an FIR against him, against Mr. Robert? Yes. Objection, my lord. What's the objection? Prejudicial. Sustain. Okay, so what transpired between you and Officer Robert Wilson led him
arresting you for the charge disrespecting peace officers. Yeah. So leading up to it, when he said you can file a report against me, and he said he was the highest in charge, and I told him, how can I report something if you're the highest in charge? In my opinion, you're a corrupt cop. He said okay, and then he arrested me and put me in handcuffs for disrespecting a peaceful officer. And I told him that's my opinion, and I can state my opinion. Are you arresting me for my opinion? And he said yes. Go do a court case. And then he let me to the car and put me in the back seat of the car in cuffs, and he read my laws, my Miranda rights. Okay, after a But while, he clearly said, I clearly asked him, are you detaining or arresting me? And he clearly said, I'm arresting you. And then he put me in the car and read me my Miranda rights. Okay. After a while, when you were in car, one of your friend came to you. Can you tell who was he? Yes, that was Mr. Chuck Capone. Yes. So what did he ask you? He pretty much asked me what happened, and then the cop came in between, and they went aside, and they had a long conversation. I've been sitting there for a good 20 minutes in the back seat of the car, handcuffed, not knowing what was going on. रहेगा तो लग And, जाएगा, पता नहीं yeah. मुझे है कि नहीं. Yeah. So when your friend had a conversation with Mr. Robert, did your friend came to you in between and asked you something? To do anything? Can you repeat that? While you were handcuffed and sitting in the car, Yes. and your friends were having conversation with Mr. Robert, did Yes. they came in between and asked you for something? Objection. Yes, they pretty much returned and asked What's me. the objection? Hearsay. Conversation between two people without any substantial evidence. देखना तो. No, That's I'm right. asking. चलता रहता है, देखते हैं क्या होता है. I'm asking what. Do you have the proof of it? The conversation that happened? Yes, Mr. Chug is here to testify him. So that is the conversation that happened between Mr. Yeah. Chug and No, I'm your asking client, Mr. right? James. I'm asking Mr. James what happened, like what conversation Mr. Chug and Mr. Trevon have after after Chug has consulted the cops. Exactly. So that is a conversation between two people for which I need proof. Until then it will be considered as hearsay. Okay, Because so yeah. There were actually two people there. So then are those people present on the witness list? Yes, it was Atina and Chuck Capone that were there. They both are present So here. then you need to bring those guys, and those guys need to provide testimony first. Yeah. Okay. Okay. Yeah, and then probably he can say that. Wait, Trevon, wait. Trevon, wait. Oh, okay. Yeah. Yeah. Sure. Okay, I will ask another question. No worries. Did any time your friend or officer asked you to apologize, Mr. Robert? Yes. Mr. Chuck returned to the car with the cop, and he asked me, all the cop wants is an apology from you. And I told him I did do nothing wrong. I don't have to apologize. I stated my opinion. And Mr. Capone told me then at that moment that he felt hurt about the fact that I called him a corrupt cop. Then I said, okay, I don't really care about his feelings because I'm just stating my opinion. And he's heard about that and he has to follow the law. And the law says that I have freedom of speech. And I'm willing to express that. He's saying what? And then he said in the back and he said, yeah, I'm just trying to do my job. And I don't know why he's saying that to me. In this case, that was Captain Robert Wilson. Okay, you know why he left you and like why did he get you freed afterwards? I actually don't know. He just walked up to the car. He didn't say much. And he let me out of the car and he uncuffed me. And he really didn't say why he uncuffed me. Do you feel he realizes that he was doing a mistake? Sorry? No, he didn't say it was a mistake, nothing. Before he said, I'm clearly arrested for disrespecting a peaceful officer. And he put me in handcuffs. He read my Miranda rights. And then 20 minutes later, he comes back to the car, puts me out of the car, and uncuffs me. So he never stated why he did that or why he let me go. It was really weird for me to experience that. Okay.
I have few small questions left. So, can you tell us a bit about your background and what kind of linguistics do you use, like from the place where you come from? Yeah, so I was born in New York. I was born in the Bronx, and there we have a lot of slangs. For example, we say a bitch ass a lot. That's a known slang. We say 5-0 coppers. We have a lot of words where we come from, which is pretty normal in the U.S. in the New York, and that's why I speak the way I speak because I was born with that slang, and I learned that slang, and that's why I express my feelings within that slang of New York Bronx. Do you use slang only to disrespect anyone, or you use it like No, it's no, a no, habitual no. thing? Yeah, it's a habit. It's not about disrespect. Not at all. Yeah. Okay. So after this incident, I got to know you have went to a doctor as well. Can That's you right. That's right. tell something about that? Well, after this incident, I felt really emotionally hurt about what happened, about the fact that I was unlawfully arrested and put in handcuffs and put in the backseat of a car for 20 minutes and then let go without any explanation. And I felt very powerless because I feel like as a human, I have the right to express my feelings and use the first right of amendment. And I feel like that was violated at that moment. And so I went to the doctor. And the reason for that is that my people were shouting at me a lot, telling me I'm a criminal for the fact that I was put in a police car. And it seems like my reputation just got really bad hurt, which led me in depression. Very heavy Also, depression. objection. What's your objection? Sir, there were foundation issues in the statement made by Trevon James right now. He said 20 minutes, wherein the petition submitted by the prosecution says 15 minutes. So, sir, that's lack of foundation. And can you be a bit louder, Angad? Mike. Sir, during the statement, Trevon James just mentioned that he was detained for 20 minutes, but the prosecution's petition says 15 minutes, so it's lack of foundation. The prosecution said how many minutes? 15 minutes in the petition. Can I see that petition? Is it there in the same place? Yes, sir. It's the petition they Yes. submitted to the court to. Yes. Let me take a look at it and then I'll. Sure. Just give me 1 second. आवाज आ रही है मेरे को नहीं है नील से कुछ खाने पीने का अंगद यहाँ पे ना हाँ जी सर बोलिए. So you can mention that difference of culture doesn't give someone right to disrespect someone. Yes, sir. Yes, sir. Already mentioned. वो वाला जो he was telling ना कि bitches we use in a normal slang. Bitch as fucking. I mean he won't use bitches in front of judge, right? So why to use it on streets? विराज खाने को है क्या Paper. पेपर 32 कैसा लाइट है अच्छा बता डिमोटिवेट नहीं हो. Objection is sustained. Thank you, sir. Okay. Can you tell about your incident, Yes, like okay, so your sir, incident with the doctors? Hello. My incident with the doctor. Alright, thank you for the subscribing, guys. Well, Thank you, Lex. Bye. When I arrived, I was very emotional about what happened. हाँ हाँ तोड़ेंगे And अंग्रेज को भी तोड़ेंगे टेंशन मत लो. right now I'm in Full therapy, तोड़ूंगा. and I've been going to therapy sessions to clear and help my mental state for the incident that happened at the courthouse or city hall. मेरा आवाज कम आ रहा है अब ठीक है? वो थोड़ा Okay, मैंने. so you are done with your therapies and all, or there are still some things No, left? I'm still doing therapy. It's not finished yet. Okay. I actually have a session today. Okay, no. Your Honor, that's all question from my side for now. I will like to request re-examination after the prosecution, after the defense is done. Sure. Good evening, Mr. Trevon. Good evening. Firstly, I would like to ask you that are you mentally fit right now? Is everything okay? Are you
Good to be here because I don't want this to be traumatizing for you. I was clear to be on stance. Are you clear? Perfect. But you're feeling okay, right? I'm feeling okay enough to be here on stance, so yes. Perfect. So earlier, when Mr. Vincenzo was asking you questions, they mentioned a few slangs. What were they? Can you just repeat for my knowledge? Yes. Like I said, I was from New York, the Bronx, and we use slangs such as bitch ass over there, and other slangs that we use in the normal daily life that is not always disrespectful or always used in a disrespectful manner. We also use slangs in a normal manner. Okay. Now I want to ask you that did you use any of these slangs for Mr. Robert? I called him a corrupt cop, yes. Apart from any prefix to that? Yes, I called him a bitch ass corrupt cop, yes. Okay. So if the judge decides to rule against you today, would you call him any of those slangs? If he rules against me today, then what? Would you use any of those slangs for him? As I said, I use Objection, those slangs. opinion. That's not. He's not asking for. He's asking for Trevor's opinion. He's not giving his opinion. Overruled. As I said, I use those slangs in a normal manner. Okay, point to be noted, judge, that he used, and he didn't call Robert just a corrupt officer, he used the words bitch as corrupt officer. Moving forward, Trevor, when Robert met you outside the city hall, did he first give you a warning or he was hostile with you from the start? To my feeling, he was hostile at the start. Did he give you a warning first? Is my question. Yes, he gave me and the Tucker the warning, yes. Okay. Could you also elaborate on the scuffle you had with Mr. Thakur? Yes, Mr. Tucker really wanted my vote, and I didn't want to give him that vote, and he became very hostile towards me because of that, and he pushed me 2 times. Because I didn't want to give my vote. I was voting for Gilu at that time. And he wasn't satisfied with that because I met him a couple days earlier, and he said, "You are my friend, and now you're voting for the enemy." And yeah, Okay. he just became hostile for the fact that I so-called switched on him, as we should say. After this, did you go to the police department and launch a FIR against Mr. Thakur? No, I went to Faisal when were you asking me about the scuffle or about the fact that After this incident, did you go to the police department and lodge a formal FIR against Mr. Thakur? no, I went to my lawyer. Did you and your lawyer then go file a FIR? Not that I'm aware of. Okay. Okay, moving on. You've also filed for defamation over here. There was an exhibit submitted from LS Customs to us earlier this evening. I wanted to know, did you go to the police department through your lawyer to get an NOC? If I went to the police station to get an NOC? Through your lawyer. Did you, through your lawyer, go to the police station to get an NOC? No. Okay. When you went for a job at LS Customs, did you what conversation did you have with Miss Sarah? Yes, I asked her if I was able to work there, that I have some mechanic skills that I learned back in New York, because I used to fix cars. And she told me, I don't want such a criminal here in my company. And she didn't really give me a chance or anything like that. She didn't really ask much. She knew I was Trayvon James. And she right away told me that she doesn't want such a criminal
in her company, and it just hurts. Okay, Judge, I would like to point out over here that Mr. Trayvon James is blatantly lying in this court. We have submitted evidence, a testimony from Ms. Zara Hayat, with front of the prosecution lawyer as well, where Mr. Prosecution lawyer had asked Ms. Zara what had happened, and she's clearly stated that Trayvon James had come to her for a job, where he stated that he has a problem with the PD, and Miss Zara's response was that till you solve that problem with the PD, she wouldn't be able to give him a job, and if he got an Objection, Your NOC, Honor. what? Miss Sarah didn't said anything about a problem. She said that there was an incident with. Do we have Mr. her testimony? Testimony has been Yeah, we submitted, have sir. her testimony. In the Can we testimony, play she it right here in the court? sure. Yeah, let's play it. Can you play it? Were you recording? Yeah, it's been submitted. It's been submitted. It's submitted. I can see Actually, it in the we, like, evidence section. I just want it guess to be we played can- right now. Yeah, we can play, but like I don't think so. We can play videos on the screen. Videos नहीं We होते can हैं। only We play can like actually images. play video. We can't do Atticus. We can't do videos. We can actually. ये वाला I'll give it a try. नहीं नहीं, अगर ये छोटा चेतन वाला स्क्रीन है तो नहीं प्ले कर पाओगे। नहीं छोटा चेतन वाला नहीं है शायद से। नहीं सर, वो नहीं, छोटा चेतन वाला ही PD है। वाला अपना। ऑल्सो विंसेंट तो साहब यार ऑब्जेक्शन के टाइम पे बता दिया करो कौन सा ऑब्जेक्शन है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो बता देंगे। नहीं आप ऑब्जेक्शन के बाद ये स्टेटमेंट देते हो यार, थोड़ा बता दिया करो कौन सा ऑब्जेक्शन है। पूरे पहाड़ में खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ। Respond to it. वो ऑलरेडी एक्टिव है। It's not working. No, this one doesn't support like videos. It doesn't support videos. Okay. We should have a one with videos as well, something similar to the previous. We'll order one. है ना? Yeah, let's order. Hi, Okay, for now then, can you give me the exact timestamp of the deposition when Give me this a question moment. has been asked? Give me a moment, sir. कर लेना सब लोग, ठीक है? ताकि उनको थोड़ी गाड़ियों में तो अगर टाइम बोला उन्होंने बताया कि उसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने बताया कि उनका कुछ एग्जैक्टली तो याद नहीं है। फिर उन्होंने उस टाइम बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं आपका एक इंटरव्यू ले लूंगी। और sorry. Sir, 40 seconds Angad, onwards. 40 seconds onwards. No matter, I know you're very competitive, but no matter how much you hate Vincenzo, No, he's your colleague. I don't hate him, sir. Sorry. Extremely apologize. That's fine. Have you sent it to me? So 40 seconds onwards. In the evidence summary. Give me a moment. Let's take a look at it. कर लेना सब लोग, ठीक है? बट जब मेरी दोबारा बात हुई उसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने बताया कि उनका कुछ सिचुएशन चल रहा है, अरेस्ट या किसी चीज में। तो ये सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हारा पीडी के साथ कुछ सिचुएशन के आपसे बात हुई, वही मुझे समझ में आया। उसने मुझे बोला कि पीडी के साथ कुछ मैटर चल रहा है उसका। फिर क्योंकि वो बात सुनी भी हो गई, कर लेगा एनओसी।
रॉबर्ट, अच्छा फील कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हैं अंगद सर? अच्छा फील कर रहे हो तुम? बहुत ज़्यादा। अच्छा कर रहा हूँ मैं, तुम्हें बहुत सेटिस्फेक्शन ज़्यादा। होती है? ठीक है, थैंक यू। सुनो मेरी बात, हेलो रॉबर्ट। जी मेयर साहब। राणा सर, क्या लगता है कुछ होगा मेरा इस बार की नहीं? तुम्हें पता है ना मोए को कितना काम है? हो जाएगा, आप बता देना पहले जाने से। मैं फार्मर्स वेट कर रहे हैं अगला आपको बुला लूंगा मैं, ताकत जी, अगला आपको ही हो बुला जाएगा, हो लूंगा। जाएगा। सुनो इसका एकदम नाम शांत टिट्सवान जेन है ना? ट्रेवॉन ट्रेवॉन ट्रेवॉन। आप टिट्सवान मिस्टर टी बोल रहे हैं। एक बात बताना, एक बात बताना, सुन एक बात बता। मेयर इलेक्शन अनाउंस करते थे। डायना हेलो। Objection will be sustained. What you have mentioned, Angad, it's absolutely right. So objection Are you overruled, right, sir? lying, Trevor, right now in the Your Honor, court I of would law? like to request a sidebar once. सर ऑब्जेक्शन ओवररूल होएगा ना? सस्टेन तो विंसेंजो ने किया था। हाँ उनका overrule हुआ है, but the testimony that has been showcased of Zaraya that says otherwise of what Trevor has mentioned in the court. Your Honor, can I have a sidebar with Sure, you sure. and yeah. Okay, so in the statement, actually Zara said two different stuffs. In starting, she said something else, and in the end, she said something else. So I would like to turn the witness hostile. If you want the other part, I will show. Like, if you have seen it at the end, she says something else. I will be putting it like the specific part. Can you tell I me have the clipped timestamp? it. Yeah, I have clipped it. Like if you check this part. Can you share the Here times? she says something else as well. So I would like to turn the ठीक है, witness जरा hostile. एक बात बताइए, अगर वो आपके पास आते, जॉब मांगते, एनओसी देते, क्या तो चल क्या रहा आप है? उन्हें जॉब दे देती? अगर वो Your Honor, no. That is my question. Is if he would have just gotten an NOC and he wouldn't have got, she would have got a job. He is the one who mentioned to her that he has something with the PD, instead of she mentioning anything. Over here, Trevon said he has mentioned, like she told him upfront that she wouldn't give him a job. That's what I was So I mean, portraying. it's a hypothetical situation. She's saying yes to, right? Yeah. So that's the. I'll try. I want to Vincenzo? continue this in the case. I'm saying I'm saying that I would like to turn the witness to hostile and No, but that's not gonna happen. She is not. She didn't say anything else. What she said in the first aspect, she said stayed true to it. She just said that if I would not have known that, and if I would have received the NOC, then I would have probably hired him. So I would like to continue this in Right? the So it's a case. completely hypothetical situation. It's a part Yeah. of my Go ahead. argument. Even if we turn her hostile, then Travon's testimony for LS custom won't be considered then. yeah, that's okay. Because who will Are you prove sure? it then? It would But be she hearsay. is not going to turn hostile because what No, the I'm just objection giving that the you option made is to and just Mr. overruling it. Yeah, Like I'm saying, like she's my witness, so I would like to turn her for that. But she's not on the stand. This is a But then, recorded okay. testimony. Vincenzo, No, yeah, the thing is, if you turn her hostile, then whatever Travon is speaking about the LS custom incident, then how Yeah, would you We prove that? won't. Yeah. I have different things. It would become hearsay, right? Yeah, so we won't be considering that the You job don't want to part. consider it? Sir, it Whole is LS my custom thing. evidence. Sir, it is my evidence. How No. can he not? She's my witness list. The testimony was there. Like I asked him to record only. It's She was my in my witness deposition. list. No, she is not on a witness No, He list. deposed her, right? I deposed her. But the position was not there. She has an urgent emergency. That's why we both agreed that whatever we have, like we can take her testimony here only. So you should have, before when you heard her say that, you could have declared her hostile. Vincenzo, her testimony will be taken into account. She should have been declared hostile before the case started, as it was submitted before the case, as a part of discovery. Just because now it is not going in your favor, you can't just turn her hostile. But To she's turn my her witness, hostile, no? you need to. Just because she's your witness doesn't mean that. I You need to prove that she's lying. Then only I'll turn her hostile. okay. But So Mr. James there is is saying something else. She's saying something else. We have two opinions here. who's So saying how can something we else? be? Mr. James is saying something else, right? James? According to the Mr. Trayvon. James. Like his full So name is he's the Trayvon one James. who's. So do you think I should? Wouldn't that be considered as hearsay then? So I'm turning her hostile, right?
I'm not Okay, you can asking turn you her. to consider this You part. can turn her hostile, but I can still make an argument, right, on it. Your part, what I know about how being making the witness hostile is you cannot consider that part, right? What does this mean? It's on my point. How will I prove it other way? But why didn't you turn her hostile after the deposition, before somebody, like after The we submitted case is the... starting right here, right? So No, the the case... testimony to is to No, Vincenzo, you cannot turn a witness hostile when that witness starts going against you. But Just saying. okay, I don't want to argue, but like it was my thing. If you are denying it, it's no problem. No, honorable But judge, to I have me, a it was like question. I wanted to turn it. Vincenzo, I have a simple question. This was a recorded testimony. It is something which is not happening here. And The witness is not even here. How are you going to treat that? You need to tell me that the testimony is incorrect. You need to prove that. Then only I won't allow it in the court. He's saying something else, right? So how are you sure that Zara is not lying and Mr. Trevon is lying? Cool. Okay, no problem, sir. That is the whole case is about. Yeah, so like both things are there, right? So I'm turning her hostile from my end. Cool. Okay, no problem, Vincenzo. Thank you. Vincenzo, This is on you, Vincenzo, let me make one clarity. For the witness you want to turn the witness into hostile, right? Yes, Ivan. Is the witness क्या हाल present चल here? guys? अरे बहुत केस take complicated consideration है. of testimony मेरा only, काम है Answer my इसको और question. complicate करना. Vincenzo, answer my question. Is the witness present here? No. The witness is not present there, right? So what Ms. Zara did, she gave her testimony, correct? She gave her testimony under oath, correct? She's a witness, didn't correct? take It was a any oath. deposition. She didn't take any oath, by the way. You can ask, you can confirm with the ATA. Depositions are being taken under oath, right? Correct me if I'm wrong. But that was not deposition, and he didn't ask for any oath. Now you're saying that was not deposition. But did your witness? You started So what the were you doing questioning. over there if it was not a deposition? You started the questioning, Vincenzo. Are you okay? Vincenzo, Because it's okay. I've turned around your witness against you. That doesn't mean you create a false drama in the court, man. I'm sorry. I am going to take I am okay. I am going to take her testimony in. I'll explain it to you later. Why? Okay, no worries, no worries. It Okay. was just my point. If you were denying it, it's okay. If I'll tell you, if she would have been here in person, then you could have turned your witness hostile by presenting arguments in front of the court that she's lying. Make sense now? Okay, we will have a detailed discussion later. No worries. Sure. Yeah. Thank you. Thank you. Mic on पहले. Sir, can I get like a minute to get back my train of thought? I've just lost it. Let's do one thing. Let's take a recess and for 5 minutes, and then let everyone have a drink or a snack, and then let's reconvene in 5 minutes. Perfect. Thank you, sir. We reconvene exactly at 10:25. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. विंसेंटो इधर आ. Guys, मैं भी 1 मिनट का ब्रेक लेके आया. Don't come with me. 1 सेकंड. अंगद भाई हाँ जी बोलो. कर लो क्या हो गया? Recess हॉस्टल की आवाज 2-3 बार आई बस. अरे वो कौन हॉस्टल बन गया? ज़ारा का टेस्टिमनी अरे हॉस्टल प्रूफ अंगद मेरे को एक चीज बता. कैसे? हाँ जी. यहाँ पे आना एक बार. हाँ जी सर. क्या लग रहा है मेयर ने जो स्टोरी बताई थी कि उनके साथ जो चीज हुई, ट्रेवॉन तो आके बोल रहा है कि उसके साथ वो चीज. ताकत जी वो हियर से हो जाएगा. एक बिल पास करवाना था. नहीं बट मैं वही बोलता हूँ कि तो फिर दोनों किस काम अरे भाई साहब तुम एक तो बिल केस खत्म हो वो 1.8 मिलियन वाला. क्योंकि ये बोलेंगे कि उन्होंने मेरे को मारा, वो बोलेंगे कि हाँ तभी तो ये बोलेंगे कि उन्होंने मेरे को मारा. वही तो रॉबर्ट का दोनों को वार्निंग देना सही है ना फिर. वही तो प्रूफ करना. जो टेजर होता है ना. नहीं इन्होंने मेरे को जो बताया था उसमें तो ये ऐसे क्लेम कर रहे थे कि इन पे चीजें गलत हुई है. पता नहीं सर, मेरी भी पहली बार. हेलो मेयर से थोड़ा क्लियर कर दो, अभी एक ब्रेक है सेकंड तो उसे हमारे साथ आ सकते हैं? इनके साथ एक मेयर के सेकंड। साथ. मेयर साहब 1 सेकंड. यार ट्रेवॉन ने तो जो आपने हमें बोला आपके साथ हुआ है, वो ट्रेवॉन बोल रहा है आपने उसके साथ किया है, ऊपर नीचे हो गया पूरा. नहीं वो झूठ मेयर सर हेलो. वो झूठ बोल रहा है. रुक जा ऑब्वियसली झूठ बोल रहा है. मैं क्यों करूंगा? आपको लगता है कि मैं नहीं मैं अंगद भाई इसमें डाउट वो लगने से नहीं होता ना कोर्ट में. हाँ जी बोलो.
उसके पास प्रूफ ही नहीं हॉस्टाइल होगा। तभी प्रूव होगा ना अगर he पास कौन सा is proof क्या है? बोलते हैं उसको, हाँ अगर तो वही उस तो फिर बात का वही लॉजिक ही नहीं हुआ। प्रूव कर दे तो मैं वही बोला तभी अभी इसको अंगद को। वैलिड एविडेंसेस तो थोड़ा प्रूफ तो तो हाँ। किसी भी hostile चीज होगा। का नहीं अरे है। इस बार वो कोर्ट ब्रो में नहीं है, उनके किसी भी हमारे चीज पास की बात नहीं रिकॉर्डेड है, ये टेस्टिमनी दोनों जहाँ पे हम दोनों कॉन्ट्राडिक्ट लॉयर्स करेंगे एक प्रेजेंट थे। दूसरे के स्टेटमेंट। अभी क्या उनके हुआ थ्रू है नहीं कि आ मैंने पाएंगे, क्योंकि वो चाहे वो यूज मेरे कर पे ली भी उसके अगेंस्ट आ तो जाए हॉस्टाइल मतलब। हॉस्टाइल चिल्ला रहा है और कुछ सामने से आप लोगे फिर से सामने से अंगद और सर दूसरी मान बात, गए सर। रॉक बोल रहा हूँ रॉबर्ट, इसका तुमने अरेस्ट करके जेल किया था? कुछ नहीं किया। तो किस बात का नहीं केस है। हो रही है? अरे वैसे Exactly रॉबर्ट वही एक तो और prove कर चीज, रहा है। ये जी, सर। मिरांडा मिरांडा क्यों कर रहा है? आपने मिरांडा राइट सुना है? यहाँ कौन नहीं बताता। अरे उसने बोल दिया, सुना मतलब है। भगा है। तो हाँ डिटेन में सुना तो है। सुनाते, ये क्यों नहीं सुनाते कि हमको आप लॉयर नहीं, ले किसने सकते हो? मैंने ये अंगद बोला है, मैंने बोला है लॉयर नहीं ले नहीं सकते हो आप। सर उसने बोला था सर, क्या कहते हैं जो पुरानी मैंने बोला स्टेटमेंट है ना, डिटेन किया है। उसने बोला था सर आपको मेरे राइट्स बोलने पड़ेंगे, मेरे राइट्स करने पड़ेंगे, मेरे को लॉयर चाहिए सर। वो ओवरली एग्रेसिव बोला, तो मैंने कहा बैठिए आपके राइट्स ये हैं, आपको लॉयर दे दिया जाएगा, स्टिल लॉयर ही दे डिपोजिशन अपना डिटेन में राइट्स नहीं सुनाते वैसे तो, बट ठीक है, लाइक चलो इट्स अप टू यू गाइस। सर हम ये बताते हैं एटलीस्ट कि आप लॉयर ले सकते हो, मैंने ये बताया है। ठीक है, पर विंसेंस अगर इस चीज का मुद्दा बनाएगा तो उसके फायदे की चीज है, वरना तो ठीक है अपने ही। कोई नहीं सर, मुद्दे सारे हम तोड़ देंगे। बोले भाई। हाँ विंसेंजो, कुछ बात करनी है, एक सेकंड रॉक तुमको कौन सी बिल पास करवानी है माइक बताना? माइक को बाहर भेजिए, माइक पैरालीगल हूँ, पैरालीगल हूँ, पैरालीगल कागज लेके जा रहा हूँ साथ में। पैरालीगल तो है। आओ जाओ, एक मिनट अंदर। मतलब तुम तो सेना लेके खड़े होते हो। आप डीए लेके खड़े हो सकते हो, मैं पैरालीगल नहीं लेके खड़ा हो सकता। अरे डीए आए क्योंकि सही है केस में। हाँ जज सर कैन यू कम इन फॉर अ मिनट? क्या हो गया? I want to ask for a continuance because Zara's testimony is very much important, and in the video she is not under the oath, and I want her to be present. क्या चाह रहे हो तुम? क्या चाह रहे हो ये बताओ मेरे को। विंसेंजो पहले तो समझ तुम नहीं खुद आ ही रहा। उसको प्रोड्यूस कर रहे थे कोर्ट में, तो ये अभी तो उसको तुमने भी गलत हॉस्टल किया। बना दिया, विंसेंट अब तो उसको तुमने उसको ये कर केस के दिया। पहले क्यों नहीं बोला? केस के ये पहले बोल यहाँ पे देते, इतना टाइम पास वो नहीं क्या होता। सर्कस चला रखा है मैंने। ओके, एंड व्हाई इज माइक क्रॉस हियर व्हेन ही हैज रिजाइंड? Sir, I resigned as a private attorney. I still have my license as a paralegal. नो, यू हैव नहीं, ऑलरेडी तुमने बार लाइसेंस सबमिट कर दिया था मेरे को। बार लाइसेंस सबमिट कर हाँ दिया सर, भाई साहब तो आपने। प्राइवेट अटर्नी था ना। माइक भाई रुको रुको, नहीं, रुको बट दिस मैं इज जजेस चेंबर, नो यू आर नॉट अलाउड दिस साइड। सर आई एम ओके सॉरी। ओके। रुक जाओ बाहर हाँ। रुको, मैं आता हूँ। विंसेंजो सारी बात हाँ, मान ली बोलो। कि टेस्टिमनी गलत थी, बट फिर आपने खुद ने भी उसको एज अ अलाउ क्यों कर दिया एट फर्स्ट? ये बोल रहा हूँ। नहीं देखो, फर्स्ट वो टेस्टिमनी थी, बट आई एम बट हाँ विंसेंजो जी, आपका बोले टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से आपने मेरा कैमकॉर्डर यूज करवाया। ये हाँ, वो ये चीज चलेगा। आप सबमिट करने वाले थे, आपने कहा कि आप कर दीजिए क्योंकि आपको टेक्निकल हाँ। डिफिकल्टी हो रही है। आप अपने ही एविडेंस को, ये एविडेंस आपका सबमिटेड है, ये मेरा एविडेंस सबमिटेड नहीं, आपका सबमिटेड एविडेंस है। आई नो, हाँ तुम अपना अगर एविडेंस मैं प्रूव कर सकता हूँ ना। नहीं, आपका सबमिटेड एविडेंस मैंने डिस्कवरी में से उठा के यूज किया, मेरे यूज करने के बाद आप नहीं कर सकते, आपको हटाना होता पहले हटाते केस के, और इस रीजन की वजह से आप कंटिन्यूअस नहीं मांग सकते। सर, आई विल हेवीली ऑब्जेक्ट एंड आस्क फॉर अ मोशन टू डिसमिस ऑन लैक ऑफ फाउंडेशन ऑफ द केस। नहीं, वो सिर्फ एक चार्ज के लिए ना, ये वाला देखो, डिफॉर्मेशन के चार्ज में सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये वाला। Okay, तो so इसीलिए here एक it पार्ट is हट कि गया। if you remove that part from your, then we won't use it. Simple. Fair, right? आई एम Angad? रिमूविंग इट। So you won't be pressing defamation thing, right? Or you won't be दिस fighting इज अ even on that. पार्ट ऑफ द डिफॉर्मेशन चार्ज। सो नहीं, तो आपका जो दूसरा सबमिटेड है। एग्जिबिट है एलएस कस्टम्स का, वो भी वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो जस्ट वी कैन प्रोसीड। Simple. So like Trevon को just inform him that do not use LS custom and that all job उसका thing. हेडपॉप हुआ है तो 2 मिनट Yes. रुकना पड़ेगा। हाँ कोई ना, वो जब that's आता है fine. तब उनको brief कर देना हाँ। कि we won't be using LS customs thing now on. अरे अरे लेक्स भाई, might have to वेलकम push टू him द ahead in स्ट्रीम, the वेलकम टू stream. द स्ट्रीम। लेक्स भाई Okay. कैसे हो? Wait, let me कोशिश कर रहा हूँ मैं ये वाले में बहुत हार्ड, मिस्टर भाई को बचाने के लिए अपने। पूछा इधर आ, तो जी ऑफिस में से कर रहा हूँ मैं, अपने गिल्ड हाउस में से। हाँ जी, I guess he is here. अबे You're on fire today. बेट मत से नहीं विंसेंजो। बेट क्या है? मुझे जब तुम बोल रहे थे तो मुझे लगा था भाई आज तो आज तो तुम ही जीत रहे हो। फिर इन्होंने शुरू करा, फिर तो मुझे लगा यही जीत रहे हैं। सर ये क्या बताओ चल रहा इम्प्रूवमेंट है या नहीं है? No, I have to give you honestly, Vincenzo, I have to give you 11 out of 10 points for improvement and everything. This is probably one of the greatest cases I've been witness to
especially from a lawyering angle. I'll be honest with both of you. We're doing तो मैं a आपको hell of a job. प्रोग्रेसिव बताऊं. फर्स्ट केस प्राइवेट अटॉर्नी के अगेंस्ट, सेकंड केस प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट, थर्ड केस लीड प्रोसिक्यूटर एंड एडीए के अगेंस्ट. अब ये फोर्थ केस है एडीए और डीए के अगेंस्ट. देख लो. सर ये हालत हो रहा है ना ऐसा अंदर से धक धक. नहीं तो सही है ना यार, ऐसे ही तो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. सर इनकी इम्प्रूवमेंट देख के विंसेंजो की मुझे मेरी गेम अप करनी पड़ी है आज. मैं वही देख रहा हूँ. मेरे को I am speechless. I am just smiling. Yeah, it is such a beautiful case that both of you have brought, and the comments and the arguments that you guys are Sir, putting it's in going is to amazing. get more interesting, sir. This is just a start. I know. We have just scratched the surface right now. Is he अभी here? मेन मजा चलो है. फिर चलते हैं. हाँ It's तो 10:25. फैजल बचे हैं अभी तो आ जाए. चलो. Faisal, is he in the हाँ. is he in the train or something? नहीं वो मतलब उनका विटनेस बचा है अभी लेना वैसा. अच्छा. सर वो हाँ. लूसीफर सर हैं, बोल रहा है आपसे बात करनी है 2 मिनट के लिए. यार इसके बाद करें क्या? हाँ इसके बाद. हाँ प्लीज. चलते हैं जरा लंच ब्रेक देते हैं सर. क्या है कि ना दिक्कतें और भी हो रही है, फोन आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप. हाँ ठीक है. नहीं कोई नहीं मेरे जी, आप काम कीजिए बिल्कुल. नहीं मेरे ये को तो अभी चलता रहेगा. अरे क्या चलते रहेगा, आइए मैं आपका इंतजार कर. लंबा चलेगा? नहीं. हाँ लंबा अभी चलेगा और चलेगा. कम से कम 1 घंटा चलेगा ये. और आपको क्या लगा भाई सुनो, तभी तो बोल रहा हूँ. 1 सेकंड रॉबर्ट को बुला लो. 1 घंटा चलेगा सर, वो फार्मर्स वहां पे वेट कर रहे हैं मेरा. हाँ तो आप वहाँ है ना, वहाँ हो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे वो विटनेस रॉबर्ट भाई पर अंदर रहेगा. उन्होंने बोला था तो 10 मिनट में चल खत्म हो जाएगा. यार कोर्ट का टाइम फिक्स नहीं है मेरे साथ बताएं. हाँ फिक्स नहीं है बट एक रॉबर्ट भाई वो जज सब बता रहे हैं कि 1 घंटा तो चलेगा ये. मतलब थोड़ा सा चल सकता है, हो सकता आप रह पाओगे. मतलब आपका जितना पार्ट होगा वो पहले कर देंगे वो, और क्या. सॉरी चैट आ गया. राहुल भाई के साथ था. स्टेटमेंट जो भी है वो थैंक यू कर देंगे बाद. लेक्स भाई आने के लिए स्ट्रीम पे. Can we Pardon me. Yes, I'm. That's okay. Can we bring in Yes, Neil he's sir my because he's he my has next a he's my meeting. next witness. He's my next witness. Okay. थैंक यू सो मच. बस ये था सर. अंगद सर आप कर ले, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ इस केस के. जी बिल्कुल. हाँ जी बोलिए. आ जाए. हाँ जी रॉबर्ट. अंगद सर सीन ऐसा है ना कि मान लो क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है कि मैंने उससे सुना है, ठीक है. तो यहाँ पे आओ. हाँ आवाज आ रही है. तो मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोल दूँ कि मैंने उन्हें खाली ये बताया था कि आप लॉयर ले सकते हो. ये जिससे मैंने उनको उनके बेसिक राइट्स बताए, वो मिरांडा राइट्स में कंफ्यूज करे ऐसा कुछ. ठीक है दोनों सिमिलर हैं इसलिए कंफ्यूजन हो गया. बट मैं तो मेरे जो उनके राइट्स हैं वो लॉयर मांग रहे थे सामने से, तो मैं कह रहा है. ठीक है. मैं तो आप बोलो मैं गुड है, मैं डिफ्यूज कर रहा था सिचुएशन. मैं शांत कर रहा था, मैं डिफ्यूज कर रहा. ये बात नहीं हुई है, याद रखो. चल ये बोला कि भाई बात नहीं हुई, तुम बताओ. डीए साहब आप 1 सेकंड की चार्ज लीजिए, मैं 30 सेकंड बात करता हूं. मैं जज से बात क्या करूं? क्या करूं? आप चार्ज लीजिए, मैं 30 सेकंड्स में. जज भी वैसे पास ये ले वो है, सोच रहे. मेरी बात सुनो. मैं 30 सेकंड्स में आया, कहीं मत जाना. यही करेंगे. रॉबर्ट को बुलाइएगा एक बार. बाहर जाके बात कर ले. सही बताओ ना. एक पेपर पे इनवॉइस बना के दो ना मेरे को जल्दी से. रॉबर्ट भाई. हाँ बोले ना. इधर आओ. ध्यान सर. रॉबर्ट भाई क्या था वो? I played my fifth. मिस्टर टी. नहीं वो तो I played my fifth तो पता है, जब मेरे को कोई आंसर ना देना पड़े. जेम्स बोल दो. जेम्स. आगे नील. मिस्टर जेम्स. मैं मिस्टर जेम्स में खड़ा था और मैं बात कर रहा था इससे पहले, और फिर मैं बोलूंगा सडनली मिस्टर जेम्स आए एंड ही स्टार्टेड बिहेविंग रूडली. Yeah, acting rude. He was over very aggressive and he was very he was pushing me. He was pushing and me. he started pushing me and I warned him कि please don't push me and वरना मैं ऑफिसर्स को कंप्लेन कर दूंगा. and he again pushed me. हाँ, फिर उसके बाद I ran to Mr. Robert. हाँ, क्योंकि मुझे वही दिखे सामने. वही मुझे सामने दिखे थे. रिजल्ट वगैरह कौन देगा? Do we have everyone?
Okay, can everyone hear me? Yes, sir. Yes. Even the doctors in the bike? He's 10-7, sir. Officer can David, hear you can him. hear me, right? You guys can hear me in the back, right? Yes. Yes, sir. Oh, Voice is great. audible. Continue. Let's continue on it. Angad, you can continue. Can No, sir, if everyone? you're speaking something, we cannot hear you. Angad, we can't hear you. Yeah. Mr. Now Trevor, we can can. you hear me? Yes. Perfect. Mr. Trevor, can you hear the? Mr. Trevor? Yes, I hear him. Yes. See it? Perfect. Are you okay now? I'm hearing you. Yes. Perfect. Moving on, we will not be taking into account anything that happened at LS Customs because of conflicting statements. Okay. Also, Vincenzo, we will be not taking into account the exhibit you submitted with the LS Customs earning cap. Yes. Perfect. Mr. Trevon James, Mm-hmm. what were the charges levied at you and what was the jail time given to you? Excuse me. Let me put on airplane mode. Sure. Repeat your question. What was the jail time given to you? There was no jail time given, but I was arrested by his words and put in the backseat of a police car. Okay. Were you left off with a warning? No, he read me my Miranda rights and left me in the police car. And later he just came back, unlocked the car, let me uncuffed me, and that's it. He didn't say nothing about a warning or we letting you go. Nothing regarding that. But that for that, if you want to know exactly what happened, you have to ask Mr. Chuck Capone because he's the one that and Atina who spoke with him. No, I just want to know what happened with you. Moving on, when you were in the back of the car, did you ask for a lawyer? Can you repeat the question? When you were in the back of the police car, did you ask for a lawyer? If I ask for a lawyer? Yeah. I did tell the officer indeed that I will be going to court. But he also advised me to do that. When he told me I'm arrested, and I asked him, "Are you arresting me for giving my opinion?" And he said yes. And then he said, "Bring it to court." So he indirectly advised me to get a lawyer and go to court. No, did you ask for one? Is my question. If I asked for a lawyer, I did ask for a lawyer, and that's when Mr. Chuck Capone called the lawyer. Okay. Mr. Chuck called for a lawyer. Was there any lawyer present beside your car at that point of time? Can you repeat that? Was there any lawyer present at the scene at that point of time? Not that I'm aware of. Okay. And what were the rights read to you by Mr. Robert? The Miranda rights, sir. What were the rights? You have the right to remain silent, everything you can say. The Miranda rights. Please go on. You have the right to remain silent. Everything you can say will be used against you in the court of law. You have the right for medical help, like something like that. The Miranda rights, sir. I'm not a cop. I don't know it exactly, but I know it's the Miranda rights. And he asked me if I understood my rights, and I told him yes. Okay, you say it were the Miranda rights, but you don't remember what they read to you. Okay, fine. For now, that's it for Mr. Trevon James, Mr. Judge. I might recall him at the witness stand later in the case. Mr. Judge? No, that's fine. Yeah, Mr. Trevon, you can leave the yeah, stand. Mr. Trevon, you can get back to your seat. Yes, okay, thank you. Your Lordship, I have a
request. I know it's usually the prosecution which calls for the next witness, but at this point of time, if made an exception, I would like to call my next witness. I hope you don't have a problem with that, Vincenzo. No, I don't have any problem. Yeah, please go ahead. I would like to call Mr. Thakat to the stand. Sure. Mr. Takat, therein, please proceed to the stand to my left. मिस्टर ताकत आप एक बार एक ओथ ले लेंगे मैं जो भी कहूँगा सच जी। कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. Thank you. Vincenzo, do you want to take the questioning first since you're prosecution? No, you can. Perfect. He's Thank a you. witness, you can. Thank you. No, I just was cross-checking. Mr. Takat, क्या आप बता सकते हैं कोर्ट रूम को कि आपके साथ उस दिन क्या हुआ? तो उस दिन I was with my friend and suddenly Angad, Mr. is he comfortable with English? Because I guess Raven won't be able to understand Hindi. Yeah, let's try and take English this. Yeah, let's try and take this one Okay. ahead in English because as much as Okay, possible. Okay, मेरे as साथ- much as I can. Yeah. So suddenly Mr. James showed up and he was a bit rude and very over aggressively talking to me, and suddenly he pushed me. So when he pushed me, I told him, please don't push me, or I'll just go to the PD and report it. And he again pushed me, so I ran to Mr. Robert. Yeah, where was it? I ran to Mr. Robert and I complained that he is trying to assault me. And after, this all happened. Okay. What did Mr. Robert say to you at that point of time? What? Can you pardon me? What did Mr. Robert say to you at that point of time? Yeah, Can you hear me? No? Hello, can you guys hear me? You can explain the question to me in Hindi if you want. नहीं हिंदी इतनी भी कमजोर नहीं है मुझे पता है रॉबर्ट ने क्या बोला था Okay. I'm trying to recall it's like 30 minutes I'm sitting and it's Please go like ahead. Okay, no problem. No, try to recall. Are you okay, Mr. Maya? Yeah, I'm still trying to recall it. नहीं मैं आपसे पूछा था उन्होंने आपको क्या कहा मतलब कुछ बताया होगा कि ये करना है ये नहीं करना है कुछ तो बोला होगा आपको उन्होंने वार्निंग दिया था मुझे ये मी अ वार्निंग अच्छा आपको वार्निंग दिया था या ठीक है क्योंकि the exact same time Mr. James went to another officer, that's why it was like a warning to both of us कि please be silent. ठीक है और उस वार्निंग के बाद व्हाट हैपेंड उस वार्निंग के बाद I just left that place और उसके बाद Mr. James वहाँ पे थे and he started talking very rudely to Mr. Robert. अच्छा would you describe Mr. James' behavior overly aggressive? Yeah, I was standing and suddenly he pushed me and I warned him that I'll go to PD, but he was not at all afraid of it and he pushed me again. So that's why I felt he was very over aggressive and very rude. Okay, thank you, Mr. Thakur. Thank you, Judge. Vincenzo, your witness. Yes. अरे thank you. Yes. I'm audible. पता है मेरे को तभी तो. Yes. So, Mr. Thakur, Mr. James Raman is not like a mad person or something that he comes in and directly push you away. So was there any incident or something, some conversations between you two? Angad, I cannot hear you. That's my comment. Objection, Your Honor. Leading the witness. No, I'm asking him.
No. You were asking the question with the result. No worries. Yeah. Was there any conversation between you and Mr. Trevon James? At I that plead my incident? fifth. Okay, no problem. Okay, so did you made any statement about after you were given the warning by Mr. Robert? Any statement regarding what? After Mr. Robert Wilson warned both of you for the assault thing, did you made any statement to Mr. Trevon James? No, I don't Did you say remember anything that. to Trevon James? No, I don't remember that. You don't remember that? Okay. Yeah. Okay, so I have a very small question for you. Okay, you are a mayor as well. So what is your take, like, what is your perspective of people keeping negative opinion on civilians or cops? My take on people. Object. Yes. What's the objection? There's no objection. Objection as in like a mayor's opinion in a court case. I mean, it doesn't matter. But he is a witness. He wasn't a mayor at that point in time, I guess. Yes. Yes. As a So, civilian, Mr. Takat, what is your opinion on? I won't say opinion, but what is your perspective on a person keeping negative opinions? Again, objection. How would his opinion matter to this case? I was not the mayor that time, so Sustained. why you want my opinion? Okay, Why no did you want to know about his opinion as a civilian as well? I'm asking whether a person can keep a negative opinion or not, or an But opinion should that- be always be positive. Yeah. But in general, you have to take that into consideration. Okay, so I have one question for you. As you are like a politician, in your rallies, did you make any negative opinion or comments on the last mayor or the opposing parties? Objection. Was that unconstitutional? Objection. Relevance. Sustained. Okay. How is that relevant to this case? The case is all about keeping a negative opinion. No, How the is case that? is about No, wrongful but that is not. prosecution. Yes, the case is It's about violation of you your- saying that Officer Robert, Yes. unjustly arrested your client. Yes. That is what the case He is about. unjustly arrested my client for keeping his opinion. I'm asking Mr. Yeah, Takat freedom that of speech, but it nowhere involves negative or whatever you were saying just before. That is why the objection which Angad just made, that has been sustained. okay, no problem. Yeah. Okay. For now, like no more questions for Mr. Takat. Thank you so much. Thank you, Mayor Saab. आप जा सकते हैं. Mr. Mayor, thank you so Yeah. much. Thank you so much, guys. Sorry to have held you up so long. I know you have more important I work, didn't know, but no, it's thank you. okay. May I leave the court if you don't mind? Sure, It's a absolutely, you request. can. Sure, if Yeah, you If need there you, is we'll give you a call. anything, yeah, just give me a call. I'll be there. Okay. Perfect. Thank you, Mr. Thank Mayor. you I know so you much. have a lot Thank of you so important much. work. Thank you so much, sir. Can one of the Have a good officers day, Mayor escort the Saab. mayor? Vincent, your witness. You can call your witness. I have a witness, but I would like to call him later. Do you want to call Officer Faisal first? No, it's you. You're the prosecution. You call. This was a special case as the mayor. Discriminate करते हैं cops. इज्जत नहीं है. I would like to call Mr. Chug on the stand. इज्जत तो नहीं discriminate करता है उससे. Sure. मैं एक्स मेयर को सुन रहा था. हेलो जी. Next क्या ना? सुन क्या रहे हो? सच सुन रही हो वो तो. धीरे बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो. राणा सर आपकी एक्स है? ओह गाइस, टफ चल रहा है केस, टफ चल रहा है. स्ट्रेस हो रहा है. Thank you, Daku Paraj. कैसे हो अंशु? Welcome to the stream. Nachiket, welcome to the stream. Sorry, case में थोड़ा Can you सा. please take the oath? Repeat after me. I, your name. I, Jack Brown. Objection. Swears on the city's constitution. Says on the city's constitution.
That I will say only the truth. That I will say only the truth. And nothing beside. And nothing beside the truth. Thank you Okay, guys. so Thank Mr. you Chug, guys. can you describe the incident? What happened on that day? So I was roaming around with Athena, and I got a call from Lug that something is happening near City Hall. So I went there. I see Robert cuffing Trevion, my homie, and he's taking him to the car. And he sat him in the car, and when I went to Robert, he said that he was abusing and calling him a Thank you, corrupt guys. officer. So I went to अरे Trevion. तूफान में कैसे I हो रहा है asked him, and he was saying that it's just my opinion, bro, and he just caught me Thank without you like for for my subscribing. just Welcome to stating the my stream, opinion, and guys. that's it. Okay, so after a while, you and PD officer Mr. Robert Wilson did have any conversations? Yeah, Thank I you, did. Jasar. Like Welcome, welcome. Thank I you for asked subscribing. जो आ Mr. रहा है. Robert that he's kind of new to city and he's not अरे aware of a lot of बहुत टाइम things, बाद like, स्ट्रीम कर रहा हूँ. ये केस and इतना he इम्पोर्टेंट might था कि मैं like you स्ट्रीम might करने आ be गया. offended by some of his slangs, which he did not mean to disrespect. And he said that I just want मेरे को apology फेस that कैम he भी ऑन called कर me दे तो आप लोगों के लिए on मैं. duty corrupt officer. ये लो. Hi So I guys. went to कैसे हो? Trevion and I said that Trevion, Preparation can you करके रखी हुई apologize है for guys. your देखो. words? एक So इसका he said that ब्राइटनेस was my कम करता हूँ opinion, मैं. bro. I won't be apologizing anyways. प्रेपरेशन बहुत करके रखी है अगर आप लोग देखो. ये है. And what you said to Officer Robert after that? एक सेकंड कैम ये रहा. I went to Robert and I said ये that, इतने सारे yo, like you need to calm down, right? पेजेस He's kind of प्रेपरेशन के new, करके just रखे हैं like मैंने. it's okay, just forgive him, and पूरी प्रेपरेशन. that's it. Like I requested him to let him go. That's it. आज तो जीतना है. You know, that was a long Okay, conversation, did but he I don't give? remember that Yeah. all of it. So yeah. Okay, so did he give any particular reason that why he's leaving Mr. Trevon James? बस Or आज just it was on your request? आज W for I Mr. requested him, Robert and he Wilson. was like, while उनके he लिए was uncuffing him, he just said that you have good friends. That's why I'm leaving you. You got some good friends, to be precise. That was the case, I feel. Yeah. Okay, did ever happened with you that you kept your opinion and you also got arrested? Happened like, yeah, it happened. Can you tell the court about that incident also? Objection relevance. How is it relevant? Vincenzo, can you Police tell that? officers are arresting people for keeping their opinion again and again. Also, if That there should have was a been a different violation, case, Vincenzo. yes, why there was no case? Sustained. साथ में ऑब्जेक्शन किया डी और मैंने इस बार. मेरे को ऑब्जेक्शन बोलने का है नहीं बोलने का है? कैसे क्या? नहीं, you don't have to speak in English. Not right now, not right now. मतलब अभी नहीं बोलने का है. रुके Okay, 2 मिनट जज्बा. रुके. Okay, ठीक है? जज्बा. Okay. जज्बा. Okay, so do you also come from the same place or like similar place from where Mr. Trevon comes? Yeah, that's my homie, G. Yeah. accent. Okay, I so mean, I'm can from you Los also, Santos, but he's like my race, you know? That's all. okay, so can you also tell us about few of your linguistics things? मेरे को लग रहा है नाप लेके I mean, I have some Hindi slangs as well. नाप लेके So usually we call cops like tulla, but we don't disrespect them, you know? It's just a slang. That's it. Plus, in English, we say like PDK and everything. There are a lot of slangs, bro, but I mean, that is not relevant here. Thank You you, know? Tuila. Thank you everyone for coming. Yeah. अरे देखते Okay, हैं आज for होता now, है like कि these many questions, I will re-ask him questions once defense is done. Good afternoon, Mr. Chak. Good evening, sorry. Yeah. Not losing Yes, time Angad, so long. Chak. When you were discussing the case about or whatever incident which happened for Mr. Trevon James, who all were present there with you? You're asking too much here. I mean, I don't know, bro. There was like multiple people. There were voting happening over there, you know. There was one lawyer. I don't remember his name. I remember that. Then Robert was there, and yeah, that's all I can recall. And there was my girl as well, Athena. And no one else like. There were a lot of people, bro. I mean, No, you know, in your crowded. conversation, who were there in the conversation? There were multiple co-ops as well over there, you know. Okay, and during this discussion,
you were a part of Agni Janata Party, if I'm not wrong. That was the name, right? Nah, I'm not a part. Like, I'm not a member of any party. I just support. I mean, you know, it's my opinion to support a party. That's Lack of foundation. Lack of foundation about. Like, I'm really sorry. Objection. Relevance. Relevance. Are you sure it's relevant? Yes, I'm pretty sure. Angad, can you please tell me the relevant case? Trevon James got into a scuffle with the mayor candidate of Janata Party, and That is relevant to this case because that person was a witness. Please go ahead. yeah. Overruled, Vincenzo. So was you support that party, right? Was Mr. Gullu present over there? Yeah, Gullu was there, I feel. Okay. What was the conversation you had with Mr. Robert? So he tried to explain me the whole scenario. Like, he was being, like, everyone was being abusive. And he was saying that he's corrupt officer while he was on duty. So he was like, it doesn't look good in public. That's all he said. And I said, please forgive him. He's, to be honest, good guy. But after all that incident, everyone is like acting different, you know? Okay. Thank you, Mr. Truck. No more questions. Okay. Revlon makeup की कंपनी है गुल्लू गारू. Yo, Vincenzo, my guy, should I leave? Yes, you can leave. Yes, you can, Mr. Chuck. Thank you. Thank you. Okay, I would like to call Miss Athena. Desa? On the written box. Closing में Sure, establish please go कर दूंगा कि उधर भी पार्टी स्कफल था एंड रॉबर्ट ने वो पार्टी स्कफल डिफ्यूज करने के लिए वही पता नहीं यार, मैं तो आज ही आया हूँ, पता नहीं याद नहीं. भाई मुझे क्यों बुला रहे? Listener, please take the oath. I, your name. I, अरे Athena Ash, अच्छा भाई कैसे हो decent भाई भाई कैसे हो Swears on the welcome to the city's stream constitution. welcome guys swears on the city's constitution. चल रहा है आज आरपी चल Will say only the truth रहा रेड बुल ऑल I will लगेगी मेरे only को say the truth and nothing beside it. and nothing besides the truth. Authority. Okay, so were you present at the time of the incident? Miss Athena? Yes, I was present at the time he was being, Mr. Trevion was being cuffed and put in the back seat of the police car. That was when I came with Mr. Capon. Okay. So can you please explain what conversation they have after putting Mr. Trevon in the car? As Mr. Capon stated, that we were having a word with Captain Robert and we asked him what happened. So he narrated the situation that Mr. Trevion called him a corrupt cop in public. So he was upset about that. And eventually, like after, I think the conversation went on for like 15 minutes, I guess. The whole conclusion Robert? was that Yes, sir. if he Robert just का voice apologizes, obviously you know, he will be let go हाँ जी for the Ask Robert का behavior कैसा था corrupt cop जब आपसे statement बात that कर was रहा made. ठीक He was sad about being used of a slang language, me or check. he was upset about Give me a him minute. giving an DSR? opinion. He was upset about the opinion in particular. Like that was the main thing that Robert, was upsetting him. मैं जी बोल सर रहा हूँ कि इधर आओ. क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ उन पे And डेफिनेशन का can केस you डाल also दें tell the आपके court why पास did he leave? क्लोजिंग Mr. स्टेटमेंट के Trevon? साथ उन पे डेफिनेशन सूट डाल दें हम लोग कि आपका Mr. डेफिनेशन हुआ Capon made a request. Sure. Like he said आपको जैसा ठीक that लगे. you know he's new to the city and डेसा but he's a good guy and everything. So he was let go after that. After the request एक was made by Mr. Capon. डेफिनेशन का केस डाल दें वाइल Okay, क्लोजिंग yeah. don't do स्टेटमेंट that don't do that no no These only, these many questions only, Your Honor. All right. Should I leave? नो मैम Your Honor? No, you have No, to ma'am. wait for the I'll keep it short. I know you're busy. cross questioning. All right, all right, all right. Again. So you saw Mr. Trevon get cuffed and sit in the backseat of the car. Yes, yes. Perfect. Now that we've established that, ma'am, could you tell me about Mr. Roberts' behavior during the whole incident?
Like I said, we came a little later. I did not exactly see when Mr. Takat and Trevion were having a problem, and that time I did not see his behavior. But later on, we just spoke to Officer Robert in the corner, and he wasn't like communicating much with Trevion at that time. No, So he was just I was asking about Mr. Robert's behavior with you and everyone else at that with point of us time. with Yeah, us yeah, yeah, with us he was willing to communicate, and he was willing to have a conversation, and at our requests he was cooperative that time, I would say. Okay, ma'am. And any other people present over there which Mr. Capone would have missed? um I think it was one of our friends. I think it was Love, and then I think it was Gulu. Gulu was also there. I think Gulu Seth was also there. Okay. Other than that, I can't recall other names. So, you, Mr. Capone, Mr. Gulu, and Mr. Love are all friends with Mr. Trevon James. Yes. Perfect. Thank you. No further questions, Your Honor. Thank you. You can. Thank you, Your Honor. Are you okay, ma'am? Yes, Vincenzo. Yeah, I would like to present Exhibit A. We should call Robert. Before I call the doctor himself, I want to present the Exhibit A in the court. You saying something, D, sir? Viraj, can you please put the Exhibit A on the रॉबर्ट को बुलाना चाहिए अभी स्क्रीन अपने साइड से yes. नहीं बुला रहे हम हमारे में रॉबर्ट उनके में विटनेस है Your Honor, this is a medical report Yeah, but वही है ना of the मैंने उन्हें treatment witness में which डाला ही नहीं, तो currently statement my client Mr. Trevon is going through, and the judge and the doctor here, he is here himself to testify and explain the report to us. So while he is exhibit, like we are placing the image, I would like to call the doctor Lucifer Morningstar. Yep. Explain the. Sure. Sir, objection on the witness. Okay, that is too bright and cannot be seen from here. Judge, objection on the witness. The objection is? Objecting to the witness, relevance to the case. He's the doctor, Mr. He Trevon. needs to. I'm overruling the objection because Vincenzo has apparently Mr. Trevon has gone through therapy because of this incident, and he needs to prove that the mental state of Trevon. Oh, his client. That's what he's showcasing. So if we just accept the report, can't we move on? No, he just for the explanation he has asked for the doctor. Okay, perfect. Thank you. Which is fine. Let the No doctor problem, no explain. problem. Let them do their work. Yeah. Please, doctor, proceed the stand. Thank you. Objection तो करना पड़ता है boys. तैयारी है Okay, so I guess he's on duty, so we need not to get him under oath, right? Not necessary. You can still get him on the booth. Okay, no problem. Doctor, you can take your mic from there. Yes, better. Okay. You are very. I cannot hear you properly. Can you be a bit loud? I'm audible now? Yes. You can turn on the mic from here. Yes, it's already on. Great, we can hear you. Okay. You can please speak the oath. Repeat after me. I, your name. I, Dr. Lucifer Morningstar. Swears on the city's constitution Swears on the city constitution that I will speak only the truth Speak only. that I will speak only the truth and nothing besides the truth. and nothing besides the truth. हाँ face cam on कर लिया आप लोगों के लिए आपको चाहिए था. Can you kindly explain the report to the court? Surely, sir. First of all, इन्होंने हमसे एक मेल पे इन्होंने अपना सर माइक ऑन करने बोल लो प्लीज सुनाई नहीं दे डॉक्टर का आवाज ही नहीं आ रहा लूसी माइक ऑन कर उनका माइक ऑन नहीं है शायद. सर माइक ऑन करने बोल दीजिए Can you turn on the mic again? Try again.
एक सेकंड गाइस, एविडेंस देख रहा हूँ, एविडेंस देख रहा हूँ, Like, एविडेंस turn देख it रहा off, shout and then turn it on. इधर से टर्न ऑन कर लो. हूँ, एविडेंस नहीं देखा वाला मैंने. क्या है भाई ये डॉक्टर का रिपोर्ट? डॉक्टर को क्यों ला रहे इसके बीच में? किसको? डॉक्टर को नहीं तोड़ने का मन यार मेरे को. अच्छा ये लो सब. Now it's on. Yeah. Yes, now it is on. So just I am saying that कि इन्होंने पहला अपॉइंटमेंट 24 जुलाई को लिया था ऑन द मेल एंड फिर डॉक्टर जोनाथन ने इनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था ऑन जुलाई 25. तो इन्होंने इनके रिक्वेस्ट पे ही इनका जो अपॉइंटमेंट था वो रीशेड्यूल किया था ऑन 28 ऑफ जुलाई. बट डॉक्टर जोनाथन हैड अ हेड पॉप, सो उस दिन भी इनका थेरेपी नहीं हो पाई थी. सो इनकी Doctor, can you please explain the report? Like, I'm not asking about. श्योर. तो सर ये 30 जुलाई को आए थे हमारे सेंट्रल लॉसेटोन मेडिकल सेंटर. इन्होंने अपना सिचुएशन बताई थी कि लाइक व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन द सिचुएशन. सो ही वाज टेलिंग दैट ऑफिसर रॉबर्ट मतलब पीडी ऑफिसर ने इनको अरेस्ट किया था विदाउट लाइक एनी सॉलिड रीजन. इन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा था, तो इसलिए ये थोड़ा सा हर्ट थे क्योंकि इनके हिसाब से इनकी इमेज जो है बाहर वो खराब हो गई थी एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिम दैट ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ बैड पर्सन. एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि दैट हिज किड्स वर बुलीड इन द स्कूल्स एंड ये थोड़ा सा ये सो नहीं पा रहे थे. बेसिकली ये ट्रॉमेटाइज हो गए थे आफ्टर दिस इंसिडेंट. इनके फर्स्ट सेशन में मेरे को इतना पता लगा एंड इनका सेकंड सेशन जो हुआ ये आए, इन्होंने इनका प्रोग्रेशन काफी अच्छा था. इन्होंने मेरी एडवाइसेस काफी सुनी. आफ्टर इनका जब मैंने सेकंड सेशन लिया तो इन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी कि इन्होंने एक एलएस कस्टम्स में इन्होंने अब जॉब के लिए अप्लाई किया था. ऑब्जेक्शन तो योर रिजेक्ट हो ऑनर. गया था. Wait, okay, you need not to say about that thing. You just explain the, what are the symptoms I of have him an or what? objection विंसेंट. तो ऑब्जेक्शन तो कंप्लीट Okay, हो okay. जाने दो. क्या हो गया यार? क्या मुझे कोई कुछ खाने के लिए देगा? यस सर. शिवराज है तुम्हारे पास? You guys want food? My PayPal is 175. विंसेंट तो यार वो अच्छे ऑब्जेक्शन कंप्लीट करने दिया करो. आप करें यार, वो फ्लो में थोड़ा ज्यादा निकल जाते हैं हम. हाँ, रोक दी जाए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा विंसेंटो एक रिक्वेस्ट है. Officer Faisal has a duty emergency, so he would like to be called next, if that's okay with you. एक house. Next वही है, कोई दिक्कत. Yes, let's go ahead. Sir, I had an objection. The report, most of the report contains the incident happened at LS Customs, which we as discussed will be stricken off the case. Hereby, I request you to strike off the report. And the report also contains the status of his current mental health, so it cannot be from consideration. हेलो याग्नि, कैसे हो? हाय गाइस, वेलकम टू स्ट्रीम. आज केस चल रहा है, देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चालू है, देखते हैं. Any other things? नहीं सर, वही objection He was asked regarding for the LS objection, custom. like- The session, no, I said session 2 should be stricken off the report. No sir. Am I audible? Yes sir, now you are. That's sir, your mic is not on. Is my mic on now? Yeah. Yes. Yes. So what I was saying was that the current mental state of your client has been taken into account, but anything related to LS Customs has been stricken. Yeah. Yes, that's okay. Okay. Okay, I have one more question for our doctor.
Doctor, can you tell the court, do a person normally get to know about this mental state problem on his own, or it take times, or something else? विंसेंटो सर बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. माइक ऑन कर. इसका कोई Your mic is not on. माइक ऑन. Doctor. It's on. Yep. Yes. You need to jump once, Lucifer. ठीक है तू बैठ. Okay sir, I was saying कि like जो मेंटल ट्रॉमास होते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं. लाइक कुछ लोगों को इतना इफेक्ट नहीं करता है कोई भी चीज है, बट कुछ लोगों को कर जाता है ज्यादा ही. इसके कोई अर्ली सिम्टम्स है या ऐसा कुछ है? सर इसके सिम्टम्स बेसिकली यही हैं कि लाइक नींद प्रॉपर नहीं कंप्लीट हो पाती है, टेंशन में रहते हैं, स्वेट्स होता है उनको, एंड वो ओवरथिंक करने लगते हैं अबाउट द सिचुएशन हैपेंड विद देम. Can you repeat the question please? आपका हो रहा है सर. पानी पी लो. ये आवाज आ रही है? अब आ रही है. Vincenzo, I guess there is an issue with you. Okay. Give me a second, okay? ठीक है. Angad? Okay, yeah. That's all for Mr. Dr. Lucifer. हाँ जी सर. If the defense wants to ask any question, You they can go still ahead. require me, or should I take a leave? You can leave. Sir. Thank you. Okay, all right. I have questions. Okay. Good evening, doctor. Good evening sir. Doctor, how much time did the prosecution, Mr. Trevon James mentioned he was in the PD car, back of the PD car? Sir, he mentioned 30 minutes. Point to be noted, my lord. जब petition डाली गई थी तो 15 मिनट था. कोर्ट में आते आते 20 हो गया. जब तक ये रिपोर्ट आई है सर 30 हो गया. नो प्रॉब्लम. डॉक्टर साहब एक बात बताइए. जी. You're a practicing professional doctor, right? Yes. Why does this report state your personal opinion? Sir, because मैं ही इनका लाइक वो सेशंस दोनों देख रहा था. So in my point of view, he is like mental traumatized because of this incident, and that's why I mentioned my opinion on the report. So you're so unsure. आपके जो डिडक्शन है इस केस और थेरेपी का कि आपने प्रोफेशनल ओपिनियन की जगह पर्सनल ओपिनियन मेंशन किया. Section, like he's a doctor, he has mentioned all the points which he has noticed in his patient. Yeah, that should be his professional What is opinion. that? Yeah, Not that is his a professional opinion only. He's mentioned personal opinion on the report, Vincenzo. Didn't we just agree that everything else will be stricken off and we are just keeping the mental state of the current? Yeah, I thought we agreed on that. that's what he's written, sir. Personal opinion on 2 sessions. मतलब उनका opinion as a doctor on the session, on the mental state. हाँ, तो वो we have taken the mental state into account. ठीक है sir, but that's what I'm trying to point out, that the mental state is not on professional account. It is on a personal account. Anyway, no more questions. Of the doctor? Of the doctor, yes. Doctor ने professional opinion नहीं दिया, अपना personal opinion दिया है. Report पे भी. Professional opinion तो दिया है, तभी तो report दिया. नहीं sir, report पे personal opinion लिखा गया है. आप नीचे देखेंगे report में उधर लिखा है
Sir, can personal I opinion on 2 say sessions. something here? Sorry to cut you, sir, but बिल्कुल मेरा जो No, but personal opinion. Angad, I am going to take into account the report which is there. It has Central Los Santos' report. It has the it's there on their letterhead. हाँ Even if a doctor is giving an opinion personally on that particular report, I will take that into account. बिल्कुल sir, I'm not objecting on the fact that the report, it should not be there in the report. I'm just stating to the court that the doctor was so unsure of his deduction that he's mentioned personal and not professional. I'm just drawing that Can parallel. I speak something here, sir, please? If Yes, you don't mind. sure. So, if are you pointing out that उस पे personal opinion लिखा है तो sir उस पे personal opinion on second session लिखा है sir, like क्योंकि 2 session हुआ है ना, एक first हुआ एक second हुआ, but second session पे मैंने उस पे बोला था. I And think इनका we third are अभी भी pending है. digressing from Okay, no problem, the sir. whole I withdraw the question. agenda. No more questions for the doctors. Thank you so much, doctor. Thanks, sir. Can I leave now? Yes. बुला लें अंगद सर बुला सकते हैं फजल All right, Robert. Best of luck. फैजल जी आ जाइए. Your Honor, I will be taking your leave then. Angad will be Sure. taking care of this. Sure, Atticus. Yeah. Thank you. Sir, Best of luck, Vincenzo. thank you, sir. Thank you for the help. Judge Saab, my next witness, again, I know I'm calling it out of procedure over here, but उनकी भी पुलिस की ड्यूटी है, कुछ जो उन्हें देने जानी है, तो मैं मिस्टर फैजल को बुलाना चाहूँगा. Yeah, it's okay with me. It's okay with Mr. Vincenzo, sir. Yes. आ जाइए मिस्टर फैजल. Do you want to question him or should I? No, you can go ahead. Excuse me, Judge, are you there? Yes, I'm here. Yeah. Mr. Faisal, can you take your oath, please? Mr. Faisal is not audible. Mr. Faisal, can you take a mic? Can you turn the mic on? Mr. Faisal? Sorry, Officer Faisal. I still cannot hear him. Is his mic on? I also cannot hear him. Officer Can you Faisal. hear me? Can you hear me now? Yes, we can yes, hear you yes, now. yes. Yes, perfect. Okay. I, Faisal Khan. Sir, can you tell me what to say? I, I'm not Faisal. sure. You have to say I, your name. Swear whatever I'll say will be the truth, nothing but the truth. I, Faisal Khan, swear that whatever I say in court today will be the truth and nothing besides the truth. Mr. Faisal, could you describe what happened when Mr. Trevon James approached or came to you during the day of the incident? Yes, sir, I was giving election duty on that day, and I was approached by Mr. Trayvon James with a complaint that he said that Mr. Takat was assaulting him and I should do something about it. The moment he said that, and before I could react, my captain in the police ऋषि भाई ने बोल department, दिया मैं Robert जीतूंगा तो मैं Wilson जीतूंगा. sir, also came to the spot. And I was going to tell him about this complaint, but he had come with Mr. Takat and he सब जा रहे हो? told all of us there, सब लोग जा रहे हो? especially the two parties, Trevon and तो आप Mr. मेरे को जीतते हुए Takat. देखो, we'll celebrate the win. If you guys, I've received complaints from both sides. If you have, you guys need to stop this fight immediately. I'm giving you a warning. Okay, Mr. Faisal. Okay. You want me to continue after that? No. Post that, were you involved with anything or did you take a leave? I was. I did not take a leave. I was standing right there. After that, Mr. Takat was also there. Mr. Takat said after Robert sir warned both of them, Mr. Takat said something to, I don't know who in particular, saying that "एक बार फिर मत मारना मुझे," something on those lines. I don't fully remember. It was a few days ago.
and Mr. Trayvon got a little aggressive and excited and started talking to Robert sir, asking him to take action because it's something the other person is saying something right in front of you. Mr. Robert still kept calm and said that I've given a warning to both. Don't repeat it. I'm not I'm not doing anything right now, but if you do it again, and he said that to both, including Mr. Takat, if anything else happens, I will have to take action. And after that, Mr. Trayvon, sir, can I say exactly what he said? Because it's a little offensive to me. You can go ahead. You can. Okay. He said that you're not acting the right way. I want to report to you're not doing the right thing. He's threatening you in front of you. And Robert says, if you have a problem with what I'm doing, you can file a complaint. To which Mr. Trayvon asks who should I report to the High Command? What's your rank? And after that, I think this has already been covered in what Trayvon said. But Robert sir said that he's a captain. Trayvon got even more aggressive, saying that, this is, if you're the captain, how can I file a report against you? You're a bitch ass corrupt officer. Okay, point to be noted. Bitch ass corrupt officer was the word used. And after that, Mr. Trayvon was cuffed by Officer Robert, and he was taken away somewhere away from me. I stayed there because I was still on election duty, and I was not involved in anything after that. Okay. Mr. Faisal, how tough and chaotic are election duties? It's very chaotic, sir. There are people who don't want to spend a lot of time for voting, but we have to make sure that we ensure that they're not carrying any lethals inside. It's a lot of commotion, and at that time also there were quite a few people there. Both I saw Mr. Takat. I'm not sure if I saw the other candidate, but the candidates are also coming and going and talking to a lot of people. So long story short, it is very chaotic, and we have to keep trying to maintain order all the time. Thank you, Mr. Faisal. All my questions have been answered. Your witness, Vincenzo. Thank you. Am I audible? My mic is on, right? Yes. Okay. So, Officer Faisal, I have very few questions for you. Chill. Which is like, when Mr. Trayvon came to you, what actions did you take for his report? So when Mr. Trayvon came to me and told that, as an officer, I was ready to write a report. And in fact, before that, my first action would have been, I'll tell you why I didn't take it also, would have been to identify if the person who he's accusing of assaulting him is also there. And I knew that my commanding officers, the captains there, so I would have brought the officers together anyway, but I did not do any of that, sir, because the moment Mr. Trayvon finished his sentence, literally 2 seconds, 3 seconds after that, Robert sir was also there and Takat was also there. And Robert sir started talking, so I let my senior officer handle it. Okay, did you witness any threat or intimidation made by Mr. Takat Bilzerian towards Trayvon during this incident? I will tell you, sir, exactly what I heard Mr. Takat say. I am not, I think, the best person to determine whether it's a threat or a warning or whatever. But what Mr. Takat said was कि एक बार और करे, एक बार और मत करना, don't do it again or else, something of that sort. So, but the senior you are a officer was police there. officer. Yeah, you are a police officer. You know what is a criminal threat. Objection, badgering Yes, the sir. witness. I'm just asking a politely question. Yes, sir. In my professional opinion, I don't think it was a criminal threat I made at that time. He just asked him to stop whatever he was doing. But he did said, right? The things he said. Okay. No problem. Okay, were you when Mr. Trayvon said about Robert Officer, did he mention anything about his that he's stating his opinion and not nothing else? I mean, from my memory, the best I served,
he said that I'll go back to that statement when he said that how can I complain against you if you're the highest ranking officer? In my opinion, you are a bitch ass corrupt officer. Yes. But Point to be noted, Your Honor. He Officer Razer said, "In my opinion, you are." So clearly stated his opinion there, and not any warning or threat to like that. Angad. May I say something to just answer that question again, lawyer sir? No. That is Angad, okay for me. I guess ये बोलना चाहिए. Opinion Okay, sir. doesn't give a Yeah, right to वो मेरे abuse. पास है, मेरे पास है. Sir, I have one last question. Sure, go ahead. Mr. Faisal, you can say what you wanted to say. Thank you. What did you want to say? The question is, what did you want to say? I wanted to say that even if someone doesn't use, in my opinion, isn't that still his opinion? That's not a statement. That's a question, Mr. Faisal. Sorry, no more questions. nice one though. Thank you, Mr. Faisal. Give me a second. ऐसी बातें करोगे, ऐसी गिरोगे. Any other witness? Sir? I have very last witness and like few questions from him, and then we can move to closing statements as well. The name is Mr. Nigel. बड़ा था भी नहीं. नील भाई हाँ बुलाया Like, can you open the doors? Angad. अंदर जाओ हाँ जी. Angad, this guy was not even present there. Please take your mic and repeat after me. I, your name. Wait, I'm trying to grab the mic. Okay. Am I audible? Yes, you are. Yeah. किसी का फोन I, your name. I still don't know. Swears on the city's constitution. As on the city's constitution. Will say only the truth. We'll say only the truth. And nothing besides truth. And nothing besides truth. Okay. So, Mr. Nigel, Can we please just give me 1 second? Can we please remove that report from the screen right now? Yes. Actually, we have to pay something else. Someone can do that. Like, I don't have. I'll check. Yeah. Can we? I guess you won't be able to do that. That has access for using, I guess. Or maybe. Cannot, sir. Angad sir, can you do that thing? Ryan, you can. Nope, I cannot. Kabir sir, you can do, I guess. Kabir sir will be able to do it. Yeah, क्या करना है? वो इमेज हटा के वहाँ पे लाइक लोगो लगा दो सिटी हॉल का. Yeah, done. बोल समझ में नहीं आ रहा. हाँ पीडी वाले सिंपल है. उनके तरफ से सब कुछ है. ये क्या ही प्रूव कर रहा है. Yeah, go ahead. Okay, Mr. Nigel, were you present there at the time of this incident? No. No. Do you know about this incident? My friends told me about it. Why and what did they told you about the incident? Honestly, they told me about that Trevon was trying to have a conversation with Takat, and Takat's attitude or behavior towards Trevon was little
challenging, like he was trying to poke or challenge him in some way or the other, and challenging था, ठीक है. something happened, and like then he reported that out to Robert. Thank you for the subscription, and guys. Thank you for the subscription. Robert was not helping him out properly the way Trevon wanted. So Trevon passed some comments that you are corrupt if you are favoring Takat and not listening to my and not writing down my complaint. So Robert arrested him for that. That's what I mean. Okay. And now, does this change your opinion on Mr. Trevon? I think Trevon is. So I'll be honest. I have done some petty thefts in the city. I have some criminal records. I have been guilty for that. So I believe Trevon is one of us. And since he's not good with cops, so I think so. Your Honor, the incident has gone from one mouth to another, leading a bad image of crime in front of the society. That's our question for Mr. Nigel. The defense may ask questions. किसका फोन है? Am I a bad person? No, you're not. Nigel, you're not Sorry? a bad person. No. I would like to apologize on my prosecutor's behalf, Mr. Vincent. So I'm sorry for you to have felt like a bad person. Simple question. Which friend told you about this incident? Chug. Okay. Chug, who in his earlier statement. I think Love and Cole were also there, but I don't have any clear image. But I remember Chug was there. Chug was there, and it. So you felt he was one of you. So that doesn't create a bad image for Trevon, right? No, it's good for me. So you're in. So your relationship with Trevon James is in healthy standing. It's healthy for me. Like Yeah, I have done some. Please go ahead. Sorry for cutting you off. Yeah. Just want to know. So you're good with him. You would work with him, and you have no problems with him, right? Yes. Perfect. Thank you. Witness can be excused, sir. Yes. Yes, like no more questions from my side. Also, we can move to closing statement if the defense doesn't have any. No witnesses. Can go for Let's closing. move to Closing. Prepared for closing. Closing. Yeah. Yeah. Shall I leave? Can you take a water break like before Yes, we you move can. to closing? Yeah, let's take a 5 minutes break and then move to closing and. Angad sir. Yeah. Can it be a little shorter break, so like 2 minutes, please? Thank you. Yeah, let's do. Yeah, 2 minutes will work. I actually need to attend nature's call. Perfect. Thank you. Yeah. No problem, sir. Hanji. Give me a second, okay? Just for your Please, closing mic off कर statement. लेते, mic off. So, मैं जीत गया भाई. ठीक है, just for your. अरे एक सेकंड. गद भाई. ताकत भाई एक सेकंड ना ताकत भाई. Give me just 1 हाँ, minute. देखो just for your closing statement है ना. बोलो, क्या बोलो. बोलते हैं guy putting a opinion word in front of the sentence doesn't make वो मेरे doesn't पास- gives a rights कि वो कुछ मेरे भी बोल पास दूंगा है, वो. वो मेरे ठीक पास है. है. Second thing, अगर उसको defamation feel हुआ तो what about Robert's defamation? He was saying सबके सामने you are a bitch ass corrupt officer. बिल्कुल. बाकी के जो civilians है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? No problem. वो सब मैंने कर Yeah. Done. By the way, you're doing great. To be very honest. It's my job to defend you, sir. Thank you, Mr. Angad. Thank you. I mean, I don't know. Like he's traumatized. We are handling situations multiple times. इतना कुछ होता हमारे साथ. Are we not? Doctors giving personal opinions, which doesn't even make sense. ठीक है. He तभी doesn't तो have a मैंने पकड़ा. professional तभी तो opinion. मैंने पकड़ा. हाँ, वही चीज़ है. He doesn't have a professional opinion. कि what does his profession say? बस personal opinion तो ऐसा वही हो गया ना. कोई नहीं, ताकत वैसे भी बात. Then why is he taking that? हाँ जी, ताकत बताइए. कैसे चल रहा है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है. मैं तो एक आपको चीज भाई मैं भाग के आया हूँ, मुझे लगा मैं कुछ बढ़िया चीज बताओ रॉबर्ट सर. चिल करो अपने हाथ में. आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं. हाँ. उनका केस इतना वीक है कि उसने आपको ही स्टैंड पे नहीं बुलाया था.
नहीं आपने मैंने तो नोटिस उसको किया? अच्छा नहीं जवाब दिया। हाँ वो आपने परफेक्ट किया। रॉबर्ट सर आप ही स्टैंड पे नहीं गए हो आज। आवाज आ रही है? आ रही है। प्रोसिक्यूशन का केस इतना वीक है, एविडेंस नहीं है अरे कि मेरा आवाज नहीं आ आपको रहा था तक ताकत स्टैंड पे भाई। नहीं चल बुलाया। रहा है जिंदगी चल रहा है। वही What तो do you think? What is the conclusion of it? अब क्लोजिंग पे डिपेंड डब्ल्यू करता है। डब्ल्यू W है? देखो जज पे डिपेंड करता है। मेरे को लगता है जो केस के पहले जज जो जैसे आपकी बजा रहे थे मेरे को भाई इससे डर लग रहा है बस। जज मेरे मेरा को दिवाली जैसे बजा। लेकिन मेरा और वही था कोई ना, डर नहीं है। nothing has proven, no. अरे नहीं जज जैसा भी बजाए बट वो तो सही देगा ना। होपफुली ताकत है। जज बहुत ओपिनियन मेहनत की सही है इस देगा। केस में। अगर आपने सुना होगा तो बहुत मेहनत की है इस केस बहुत में। एक्चुअली था वो, देखा। किसने मेहनत करी है? इन्होंने सामने अंगद जी ने, और किसने करी? हाँ हम दोनों अंगद तो जी आपने स्टार्टिंग की ओपनिंग स्पीच जो इंग्लिश की दी थी ना, मतलब सही बता रहा हूँ 2 वर्ड समझ में आए थे, हाय और लास्ट में थैंक यू। क्लोजिंग समझ में आएगा, क्लोजिंग समझ में आएगा। और भाई साहब इतना प्रेशर में मत डाला करो, इंग्लिश मुझे भी आती है, वो मुझे को ट्रांसलेट कर रहा है बहुत सड़ी। अरे यार शान हल्का ली खराब लगता है। राणा जी एक बात बताओ, आपको कोई बोले कि आपको इंग्लिश Am I audible? हाँ Yes, I hear you. What's your name? You are audible. Yeah, I am. Okay. Yeah, my name is Rock. Okay, nice to meet you, man. Nice to meet you. I have heard this Trevon? voice before. Yes. I'm doing my job. I'm Angad Rathore. I'm doing my job. I hope I didn't that's it. offend you in any manner during the proceedings of the case. No, what's your name? Angad Singh Rathore. Angarov? Angad Singh इधर Rathore. आओ, तुम्हें कुछ सजेशन देना है. Oh, Angarad. Oh, Assistant District Attorney. Yes. And you always represent PD? It's my job to represent the state officials. Oh, state official. So if EMS came here, you represent as well. Yes. Yeah, so EMS, even if the judge is on trial, I have to represent that. Okay. How long have you been practicing law for? It's been 4 years. 4 years. Yeah. Okay. So cool, you know, I'm the youngest lawyer to have a state position at the age of 25. You're only 25 years old? Yep. In my opinion, you look like 45 years old. My opinion. I wouldn't take that to be offense. Don't worry. Oh, okay. Now I'm just making sure, There's just situations different. All for First Amendment. Don't worry about that. Oh, okay. Well, that's a good thing then. Just making sure, man. I don't want to, so-called No, offend I nobody. that's why I said I'm doing my job. Like my job's to defend them. Yeah. I see. Well, it's okay. We'll see what the outcome is. Yeah, whatever the outcome is, respect to you, and I hope you're doing well. Your mental health is going better, and stresses are going good. Yeah. Also, okay, you're just doing your job. You just want to win. I understand. Also, it's just not about winning. Also, if you need the NOC for any jobs, you can come to me. You have no official record, so I could be happy to give it to you. Oh, okay. Yeah. I need that. Oh, Yeah, you could have just come and asked. I'll come to you. Yeah, you could have just come and asked. Because before you said, शेरशाह मत बोलना, शेरशाह जैसे नहीं है, किसी के I जैसे told नहीं you है, that the person read my Miranda के rights, जैसे and नहीं you है। said you cannot even explain what it is. Oh, that's fine. Again, that's my job. That's your job. I know. That's your job. I know. Make the judge doubt. I get it. Hey, even Chuck, Athena, all of my friends. Oh, they're all your friends? Yeah. Yeah? जितना पूछा जाए उतना ही Chuck जवाब bhai, देना। Nigel bhai, Athena bhai, I hope I didn't make you Is guys this you guys your uncomfortable. friends? No. बोलो बोलो. I was very comfortable. Thank you. Yeah, I was comfortable. I was saying that I know you guys. You guys have been my friends. I wasn't comfortable, bro. Like I'm wearing new underwear today, so I forgot to remove the Arey, bro, I'll buy you new ones, bro. So I'm already wearing a new. No, I forgot to remove the tag. And it's Arey, quite I'll give you my old कौन one. सी jockey? नहीं. But मैं briefs में. कट वाली है या फिर बॉक्स वाली है? Box वाली. बमर एंड शार्क टैंक इंडिया पे आया था. अरे इसका केस हो गया? अंगद सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट बाकी। अंगद सर, थोड़ा इधर आना। हाँ जी बताओ। हम कह रहे थे केस के चक्कर में बर्थडे पे मत आना, मत भूल जाना। अरे नहीं मैं तो ये काम कर रहा था यार अपना लूसी। हाँ मतलब वही हमने कहा कि हमारे वजह से ऐसा दिक्कत ना हो। नहीं मेरा काम कर रहा था। हाँ बस हाँ कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर अलग। आपका आप तो भाई। एक टाइम के लिए अंगद सर जैसे बाल भी चल जाएंगे। हाँ वही
मेरे पास अरे काला बना ले, अरे काला नहीं बना ये बता रहा है ये एडविन नहीं लगता अंगद सर? मेरे को तो तब से लगा एडविन करा है। ब्लैक सर ब्राउन करवा लो आप भी, कोई सीन नहीं। Not interested for that. White wing अरे से ब्लैक अरे करा ले, ब्लैक ब्लैक करा भी ले। करवा लेगा तब भी ये अलग ही कौन लगेगा है? भाई। नहीं, ये डेविड वेस्ट है। डेविड भाई आपके बाल आने शुरू हो गए? अरे मैं शेव करना आज शेव नहीं किया ना। डेली अरे सेव करते हो तुम? अरे नहीं, एक बार इनके पूरे बाल आ गए थे, फिर पता नहीं क्यों गंजे हो गए। टकलू तुम्हारे ये सर पे से खोंच किसने मार दी है? फार्मर वो बोल रहा है भैया मैं रोज 2 बजे पहुंचता हूँ, 2 हम्म। बजे से सुबह के 10 बजे तक बस फार्मिंग करता हूँ। माँ कसम, रात के 2 से? हाँ भाई, मेरी तो भाई काम। ठीक है भाई। और उन्होंने बोला मेरी भी उनको फट एक गया। स्टोरेज की दिक्कत है बस, और कुछ आ गए ट्यूज सर। हाँ जी सर। सर मैं बोल रहा था बिल्कुल कि सर। ये अभी इफ यू डोंट माइंड मैं एक बात कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। एक है कायना जी करके हैं कोई, कोई फ्रेंडशिप डे आ रहा है एंड शी वांट्स कि ऐसे वो बोल रही है कि कुछ हो सकता है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उनको रिस्पांस पे यस दूं नो दूं, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो आपसे पर्सनली कुछ नहीं करवाना चाह रही है। आई थिंक शी वांट्स टू डू एन इवेंट और समथिंग। शी वांट्स टू डू एन इवेंट एंड शी वांट्स अ फ्रेंडशिप खाने के लिए बैंड। छोड़ा बेटी? करवा अंदर सकते से हैं। कुछ पड़ा है? ठीक है, चलें आ जाएं फिर। बाकी बातें तो आपके इसके बाद केस के बाद ही ताकत सर करनी वो है। बिल दे देना ना इनको सर को। चले ये सर, भी हंसेंगे, खत्म मत ही करें। दिखाएं। चले अरे इनको ही तो देना जी। है दिल्ली लोग को। रैन सर इधर आइए जरा। क्या पेपल क्या सर आपका? मेरा हाँ जी आया। 174। अपना डॉक्यूमेंट्स जरा थोड़ा सा नीचे आप कर देंगे पीडी तो के मैं एचआर है, आपके हिसाब से आपका लॉयर अच्छा कर रहा है? आपने कोई माधव अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक सामने वाले पता नहीं एक हम याद है उस दिन झाड़ा था बैठ के। बस अगर जीत गया ना तो पीडी की तरफ से थोड़ी सी गाड़ी खरीदनी दिलवा देना। हाँ रॉबर्ट खुद दे देगा। पीडी की तरफ हाँ आप तो एडीओ, आपको तो बता ही सकता हूँ। आए जरा साइड में एडीओ साहब। बता रॉबर्ट पता है कितना दबा के बैठा है? कितना? इतना कि पूरा एडीएम लॉट ले सके वो। अरे नहीं मैं तो कह रहा हूँ पीडी की तरफ से आ जाए, सब ऑफिसर अगर 5-5 हजार भी दे देंगे तो भी हो जाएगा मेरा। I mean, can be done. 70,000 70 की है, 70 की है गाड़ी। 70 की गाड़ी है? हाँ वो है ना, कौन सी थी? मर्सिडीज। देखो इशू पता है क्या है? अच्छा कि आप लोगे ना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में खुद में $650 है। आप रॉबर्ट से बोलिए, इधर है। हाँ रॉबर्ट अबे रॉबर्ट दे देगा, उस पे है वो। ये कौन सा रूम है? है हमारा कोने वाला हमारा पर्सनल मीटिंग रूम आ रहा है। रेड हेड्स मिलते हैं वहाँ पे। रेड हेड्स मिलते हैं। पीछे आ जा, पीछे आ जा। ठीक है इधर रुको। मैं 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो। कैसे करते हैं? Can we please begin with you closing statements? कहाँ गए ये? हाँ पता नहीं सर, पता नहीं। I'll give a call week. Okay, that's it. Oh, he's there. Yeah. Can we please begin with the closing statement? Angad sir, you there? Yeah. Okay. Angad sir. क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में हम Should I begin? Yes. So, throughout the case, we have presented evidences, testimonies that shed light on the unfortunate events surrounding Trevon James, Officer Robert Wilson. What started as a simple report of assault outside the city hall quickly escalated into a situation that has now been brought to us in this courtroom. We have showed that Trevon James came to Officer Faisal seeking help and justice after he was allegedly assaulted by Mr. Takat Bilzerian. Instead of receiving a proper protection he deserved, he was met with inaction. Wilson made the controversial choice of arresting Trevon James for expressing his opinion, an opinion which is protected under the fundamental rights of freedom of speech. That too confirmed by Mr. Officer Faisal on the stand.
was arrested. His Miranda rights was read to him, and after that also, if you check the MDT report, there is no report on, like, if you check the MDT, there is no report about this incident at all. Also, Mr. Robert Wilson denied, I won't say denied, but Officer did not dared to come on the witness stand and state what has happened there. He clearly feared about the situation and he didn't come over. Moreover, we have shown that the arrest amounted like wrongful prosecution, causing Mr. Trevon unnecessary emotional distress and hardship. Instead of protecting and serving, Officer Wilson abused his power and violated the trust that public has placed in him as a law enforcement officer. As the evidences have unfolded, it has become clear that Mr. Trevon James is being a victim of the situation. He sought help from every individual tasked to maintaining the peace, and instead he was met with the unjust treatment and arrest that should have never been happened. I would like to request the court to uphold our civil laws and to set a precedent from this case, protecting every citizen's First Amendment right, which is freedom of speech and expression. Thank you, Your Honor. I rest my case here. Your Honor, I am appalled today in this courtroom, not by this case, but by the incident that took place with Mr. Trevon James and how he was represented today. Mr. Vincenzo in his closing statement mentioned that Robert did not come on the stand. Yes, the prosecution did not have enough witnesses to call him on the stand. They did not have a shred of evidence to ask him any question. The prosecution's first witness should have been Mr. Robert, but because of lack of evidence, he wasn't called on the stand. In terms of the charges, they meant civil rights should be upheld. Two of the charges are criminal charges here. First, being wrongful prosecution. Throughout the evidence, there was no formal arrest booked. There's no evidence of a formal arrest booking. There is no MBTT record, as the prosecution said. There is no jail time. There are no charges levied. The only thing which every officer and every person in this room said was there was only a warning. There was a detention which was for an assault complaint. Yes, I agree. There was a election situation over there. He was on election duty. It was chaotic, as Mr. Faisal mentioned, and Mr. Robert Wilson sought out the best possible outcome where he was a genuine officer and tried to diffuse the situations by warning both and then detaining Trevon James, whose behavior at that point was overly aggressive, mentioned by a few of the witnesses. Moving on, in the violation of the First Amendment, as I mentioned, there are some exceptions. First Amendment prohibits speech that causes breach of peace and which incites violence. I would also request your lordship to also add exceptions such as advocacy of legal action, fighting words in case bitch as corrupt officer, commercial speech and obscenity as exceptions as well. I would also request to add a legislation known as contempt of cop, which is present in a lot of great nations on this planet, wherein a person can challenge or oppose police action, but their speech should not include profane, rude, or insulting manner and should not be verbally abusive. We must uphold the right of our police officers who do their duty perfectly. The First Amendment right does not give you the right to be rude to the police and uttering fighting words which by their very utterance inflict injury or tend to incite breach of peace. The police has the right to detention. Coming to defamation, things that the prosecution needed to prove. A. A false statement perpetrary to the fact of a publication or a communication
or a statement to a third person. In this case, Robert made none. Fault amounting to negligence. In this case, Robert made none. Damages that are tangible. In this case, there were no tangible damages proven to Trevon James. They did try to sneak in the LS Customs part, but it was quickly stricken off by the prosecution itself, calling their witness hostile. Our defense to this is truth. The incident which took place was wrong, and Robert did the right thing. Thank you. चीची फाड़ दी क्या बात है भाई जॉर्ज Can everyone hear me? Yes, sir, we can. Yes, sir. फट रही है guys, फट रही है. Today's case has been a roller coaster ride of emotions throughout since the time we started. There were moments when it felt like Vincenzo was absolutely right, and then there were moments when it felt like Angad was absolutely right. There were a lot of times again when it felt like we were completely digressing away from the case. However, Vincenzo, in his closing statement, made the absolute right point, which was about the freedom of speech. If freedom of speech is something which will be stopped and barred in this city, then the civilian voice and the rest of the civilian rights are also in danger. So I would like LSPD department to pay a compensation of 10,000 rupees, $10,000 to Mr. Trevor. However, we cannot just ignore the fact that the language which was used by Mr. Trevor, even though it was a slang for him, in a civil world, it is something which is disrespectful. So from that compensation of $10,000 will be removed the fine of disrespecting a police officer, and the remaining amount shall be given to Mr. Trevor within the next 48 hours. I am striking off the case. I'm striking off the charges of defamation and others. But yeah, freedom of speech is something which needs to be held at the highest standard. And that is the reason, the compensation needs to be provided to Mr. Trevor for him being arrested just for voicing out his opinion. Although the way he voiced out his opinion was also incorrect, and that is why he will be the fine of disrespecting a police officer will be deducted from $10,000. The court is adjourned. Thank you so much. Thank you so much, Vero. Thank you, George. Appreciate it. चल 3 में से 1 तेरे को मिल गया. 3 में से 1 मिला. 3 में से 1 गले मिले रुके गले मिले पीने का तो जस्ट से बात कर दो. अरे जस्ट से थोड़ा बात करो. जस्ट से थोड़ा बात कर दो. I hope you're further. दोनों ही किसी के पलड़े 3 में से 1 मिला. 3 में से 1 मिला. विंसेंजो सर थोड़ा इधर.
एक मिनट दे, अंगद सर से गले मिलने दे हमें। अच्छा, एक हाँ। मिनट। जैसे से थोड़ा बात करा दो ना। विंसेंजो हाँ फाइनली टूट गई। रॉबर्ट तुम बच गए, तुम्हें बचा लिया रॉबर्ट, सॉरी भाई तुम बच गए हो। 3 में से 1 चार्ज ही मिला उन्हें, 2 चार्ज हट गए, डेफेमेशन रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हट चुका है। बस कौन जीता तो उनपे चार्ज लगेगा राइट? अरे 3 चार्ज में से 2 डिफेंड हो गए, 1 उन लोग कौन को। जीता कौन जीता दोनों। रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, कौन जीता दोनों क्या जीत बोला? गए। एक साइड क्या बोला? कौन है? मेरे को लगा साला ये कौन है, टेप रिकॉर्डर आ गया। अरे किसी कौन जीता बताना जज यार। सर को चाहिए, जज सर को चाहिए खाना। खाने को है क्या डीए? हाँ दे रहा हूँ, जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। हटो, दूर हटो। डॉक्टर इलाज करवाऊंगा मैं फिर। अंगद did a tremendous job, I must say. You almost turned the whole thing around. आपको भी खाना चाहिए, दे रहा हूँ सर। हाँ कोई नहीं, but you almost turned the whole thing around, I must say that. सर मिला आपको? इन्हें का मिला, खाना चाहिए। हाँ, काफी टाइम बाद इतना बढ़िया कोट के साथ। सर I tried my best, sir. I tried my best. You really did. It was not your fault. It is actually Robert's fault for being the way he is. You can't help it. Sir, nothing. My job was to get Robert off. No action to be taken against him. That happened, and I'm happy. रॉबर्ट को कितने गुंडे हिंदी में कितनी गालियां दे जाते हैं, कुछ नहीं करता है। इसको एक ने बिचास करप्ट बोल दिया तो इसकी जल गई और इसने अरेस्ट कर दिया। सर अरेस्ट नहीं किया था, डिटेन किया था। अरेस्ट नहीं किया था, तो डिटेन भी नहीं करना था उसको, बट डिसरिस्पेक्टिंग का कर दिया ना। पब्लिक एरिया में अगर एक बंदा तो डिसरिस्पेक्टिंग का हो गया ना, हो गया। तो हमारा तो बात ही, हमारा तो तुम्हें डिटेन नहीं करना था उसे, तुम्हें उस टाइम पे उसका बस फाइन करना था और जाने देना था। सर बहुत ओवर अग्रेसिव हो रहा है एक बंदा, तो आवर एसओपी सेज हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशंस। You need to calm him down, no? Did Sir, he I was calming him down. I was under my SOPs. उसके पास लीथल थे? I didn't detain चिल्ला ही रहा था ना, गले से चिल्ला रहा था ना। सर डिटेन में we never search of मेरी बात का जवाब दो रॉबर्ट, वो गले से चिल्ला रहा था? जी बिल्कुल गले से चिल्ला रहा था। और कहीं से तूने कुछ नहीं कर रहा था? हाँ जी सर, बिल्कुल गले से चिल्ला रहा था। बिकॉज ऑफ दैट जब वो गले से चिल्ला रहा था, आसपास के जितने भी सिविलियंस जो वोट देने आए थे, they were scared. गले से चिल्लाने तो उनको तुम्हें साइड लेके जाना था, उनको डिटेन नहीं करना था। सर साइड ही लेकर गया था। करके भी साइड लेके जा सकते थे, डिटेन करने की जरूरत। सर ऐसे कैसे एस्कॉर्ट कर लूं? अरे कोई नहीं, हो गया जो होना था हो गया। तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस रॉबर्ट इतने अच्छे से हैंडल करते हो, और तुम इतनी इजी एक सिचुएशन में तुम इतना फकअप कैसे कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। जज सर टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मैंने कुछ आप अगर होते एज अ कॉप वहां पे तो आप भी यही करते। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट क्या? मैं कॉप नहीं था वहां पे, पहली बात। सर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कॉप था। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट क्या मतलब? बाकी सारी चीजें तुम झूठ बोलते हो। That is why I need how, like, I know how to handle that situation over there. Robert, the case is over. I know. See, this is the thing. This is the thing. No. You don't understand when you love taking an L otherwise, but you need to understand as well, no? Just because you are ready to take an L in front of 10,000 people, but not certain individuals, that is absolutely wrong, Robert. You need to understand the basic of being fair. Oh. And understanding which fight to pick. You are picking the wrong fights. सर मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया, लेकिन माय होल कंसर्न वाज कि एक बंदा एक सेंटेंस में ओपिनियन लगा के कितने कुछ भी कॉप को अब्यूज कर देगा, तो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। तो उसको कर दिया ना डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ ऑफिसर का। मैंने आपकी जजमेंट को मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो आपको वही बोल रहा हूँ। मैंने डिसरिस्पेक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर का ही चार्ज लगेगा ना उस पे। या बस। अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। इज ही क्या बोलते हैं, going for a community service or a jail sentence, anything for that? No.
Okay. He's only the fine. No, okay. That is why वही कंफर्म करना था, बाकी मैं अरे रॉबर्ट Yeah. टेक द W, 2 चार्जेस में W मिल गया, मेरा गिफ्ट मेरे को दिला दे। दिला दो चलो इनका गिफ्ट। मुझे नहीं पता तुम लोगों की आपस में क्या बात हुई है, मैं जानना भी नहीं चाहता। देख लो। हाँ, कुछ बात नहीं हुई थी। मैं जानना भी नहीं चाहता। अरे कुछ तो गिफ्ट दिलाओगे रॉबर्ट। क्या चाहिए सर आपको? गाड़ी। हाँ? गाड़ी से तो कभी निकले। अरे यार, एक गाड़ी मैंने नहीं ली अभी तक। आओ चलो। हाँ जी मेरे तो देखो गाड़ी मांग रहा है, कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं। अरे मेयर साहब, कोई सूटकेस मांग रहा है। प्राइवेट लॉयर्स की तरह मैं मोटी फीस नहीं ले सकता ना। हाँ। अच्छा। जो स्टेट दे देती है छोटा मोटा, उससे गुजारा होता है मेरा। रॉबर्ट दे दो। छोटा मोटा स्टेट जो देती है उससे भी हमारा ही गुजारा चल रहा है। हाँ जी। हैं? छोटा मोटा X7 इतना बड़ा हाथी दे दिया जीएमसी का। हाँ। छोटा दिनाली एक दे दी। सेकंड, दिनाली दे दी। एक सेकंड, दिनाली आपको पता नहीं वो प्यार में मिली है। और जो वो आप X7 अंडरस्टैंड मिली नहीं कर लेटेस्ट। सकते। वो भी प्यार में मिली है। कौन सी? X7 X7 ईशा और वसीम ने गिफ्ट करी है। हाँ वो प्यार में ही मिली है ना। प्यार में जनता का प्यार, हम भी प्यार साहब, जनता का प्यार प्यार है। हम भी जनता का प्यार मेयर के जनता लिए का प्यार है। जी। जिससे एलएस प्यार वाले करना होता है। R8 दिला रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि R8 जो है इधर सुनो, मेरे रायन। इमोशंस के साथ हाँ, जुड़ी हाँ, हुई है। अच्छा जज साहब सैलरी। मैं एक एडवाइस करूंगा, R8 मत लेना, M4 लेना। सैलरी इंक्रीज बात कर R8 लेना, सेल के लिए आ रखी है, ले लो। स्टेट से बात कर लेता हूँ मैं एक बार। थैंक यू जज साहब। अरे हम जब जाते हैं जज साहब ये लेने गाड़ी, आपके पास तो कार ये नहीं कोई है क्या अंगद? अभी एक है, एक और चाहिए थी, पैशन है मेरी कार। नहीं आपको है स्टेट से मिल चुकी है। एक है, हाँ वो एक और चाहिए थी, पैशन मनपसंद। पैशन के लिए चाहिए। हाँ, एक वो जो टोरा नई वाली पैशन के लिए चाहिए। हाँ वो जो नई मर्सिडीज AMG। नई वाली मर्सिडीज हाँ। ये कबीर को भी दिलानी है भाई मुझे। नहीं कोई नहीं, वो तो रॉबर्ट और कबीर ने बाय द वे कबीर ने मुझे फोटो भेजी है। रॉबर्ट और पीडी दिलाएंगे अभी। रुके ना ताकत जी, अब एक डेली लोग का 81 का बिल भी लाके रख दिया भाई। एक सेकंड रुक जाओ, अब तो मर्सिडीज पे आ गए हम तो। अरे हाँ वही डेली क्या कर रहा है? जी सर। चले बैंक एक काम करते हैं यार, बैंक चल लेते हैं। आ जाओ बैंक। जज सर सर बस एक थोड़ा भाई, दो पैसे मिनट निकालने का- पड़ेंगे। हाँ मर्सिडीज बहुत महंगी आएगी। सर का पेपर बताइए। मेरा यस यस 174 सेकंड सर, क्या बैन कर रहे हो क्या? EMS से यार, EMS से नहीं जज सर हम कैसे कर सकते हैं? EMS से कोई भी बैन कर सकता है। चिकू का भी कॉल आया, यूनाइटेड टू डॉक्टर लूसिफर बर्थडे पार्टी। अरे कितने की देगा? कोशिश करेंगे, बिल्कुल आएंगे। कॉल करो जी सर थोड़ा सा अगर आप भी आ जाए। बेच रहे अपने यार, डलवा नहीं रहे होंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। चलवा रहे हो शहर में कोई नया लॉ क्या दिक्कत है R8 में भाई? करा रहे होंगे नहीं तो नहीं आ नहीं जाएंगे। सर जस्ट सिंपल है, छोटी सी पार्टी है। हाँ सारा डिपार्टमेंट आ रहा है, डीए सर भी बोले थे चाहते थे आप भी आ जाए। जी कोशिश बिल्कुल करेंगे। एंड सर सॉरी थोड़ा सा उस टाइम पहला कोर्ट केस था, थोड़ा सा लड़खड़ा नहीं नहीं इट्स ओके, नहीं इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई टेंशन नहीं है। यस ओके सर वी टेक अ लीव। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आओ भाई तुम्हारे बिल भरे चाहिए क्या तुम्हें? जेडी गाड़ी चाहिए तुम्हें? गाड़ी चाहिए क्या तुम्हें? गाली सुनाई दिया वो पीडी से ले लेंगे सर, आप सैलरी का देख लीजिए। कोड पे सैलरी का मैं देख लेता हूँ। कितनी हुई तुम्हारी सैलरी? बताता हूँ। साइड में बता, साइड में साइड में बता ना, साइड में बता। साइड में एक सेकंड उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ। मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, प्रमोशन भी नहीं हो रहा। कबीर सर सर 800 सर 800। ठीक है बात करता हूँ। रॉबर्ट सर थे, वो अभी दे देंगे। और सूटकेस अच्छा इनवॉइस लगा देना है। कल ऐसे तो इनवॉइस लगते अपने कितने डॉक्टर्स थे वहाँ पे। मैंने ये सुना कि पीडी में आप सबसे ज्यादा लॉक कर लॉक की दिया तरफ वो हो। हाँ जी सर लॉक्ड है। क्या लॉ की तरफ? आपका सबसे ज्यादा वो है झुकाव। हाँ बहुत है। ज्यादा है लॉ की तरफ, बहुत ज्यादा है झुकाव इनका थोड़ा सा। हद से ज्यादा। ठीक है तो बस रॉक आपसे सर इनका feedback नाम लेना ऐसे था। ही नहीं रखा है। रॉक सर का नाम इनका रॉक सर इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी ये जिस तरफ चले जाते हैं उस तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है। सर ऐसा क्या बोल रहे हो? नहीं बताएं कुछ कर बता दिया रहा मैंने। हूँ एडीए को। नहीं नहीं आपने नहीं हमें
प्रोसिक्यूटर्स की भी जरूरत है चलो हमें। और मेरे को आपका फीडबैक चाहिए था केस में, आप थे पूरा टाइम सुन रहे थे। सर आप लोग ने सब सही किया था, बस पता है प्रॉब्लम ये हुई कि विंसेंजो का जो गलत था वो मैंने उसको बाद में फीडबैक बताया केस खत्म होने के बाद कि सिचुएशन में उसको जो प्रूफ करना था वो फालतू में उसने एक्सटेंड किया बाय कॉलिंग आउट मोर विटनेसेस। पॉइंट इतना था कि उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होना चाहिए था कि रॉबर्ट ने हरास किया मेंटली, क्योंकि मुझे तो ये हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि व्हाई नाइजेल वाज देयर, कोई पॉइंट ही नहीं था नाइजेल का। नहीं चार्जेस मैंने बताऊं विंसेंटो को भी मैंने बोला देख भाई चार्जेस गलत थे, चार्जेस सही करते तो जीत जाता। सर वही ना, चार्जेस का तो वो ना हमारे प्राइवेट अटर्नीज को ठीक से याद रहता है ना। मैं अभी पता है हमारी रायन सर, हाँ जी हाँ जी। आर्सन का क्या काम होता है? चार्ज आगजनी? आर्सन। हाँ आगजनी बोलते हैं हिंदी में उसको। हाँ आपको पता है? हाँ हाँ तो यही चीज अभी अब रॉबर्ट सर से पूछोगे तो पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। बट तो ठीक है ये देखो रॉक सर मेरा सही काम है, था सही है। रॉबर्ट सर को कुछ नहीं होने देना, रॉबर्ट सर को कुछ नहीं हो, मैं खुश, मेरे लिए इट्स अ सर वो तो सस्पेंड आपका नहीं काम माना, ही है। बस वही बात नहीं है, मेरे लिए बस वही नहीं डब सस्पेंड ना हो। मेरे लिए नहीं वही 10,000 तो ऐसे ही बांट देते हैं, कोई रोज का है उनका 10,000 लड़कियों में पे। तो 10,000 में तो फाइन भी कटेगा। हाँ हाँ उसमें तो 10,000 का फाइन। पता है हमारा नहीं हमारा मेन था कि डिसरिस्पेक्टिंग का चार्ज हमको लगाना था, वो हमको मिल गया, हम खुश। अरे उस पे एक एमडीटी बन जाती ना तो फिर वो होती बना रहा भी है, उस वो पे बना रहा है, देने रॉबर्ट तो ही ये भी बना नहीं केस रहा होता पड़ता। ही नहीं, हाँ वही। एमडीटी हाँ बनना चाहिए था। नहीं एमडीटी नहीं बना इसलिए रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन नहीं लगा, नहीं तो रॉन्गफुल नहीं हुआ। हाँ प्रोसिक्यूशन वही। नहीं वही नहीं वही। नहीं, अगर एमडीटी बनता तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू मी, आप अभी जो फीडबैक पूछ रहे हो ना, अभी ये जो डिसीजन आया इट्स ऑन द मेंटल हैरासमेंट वाला जो केस हुआ ऑन दिस पर्सन टायरॉन के ऊपर, ये 10,000 रुपए उसके लिए आए। अगर एमडीटी बनती वहां तो मेंटल हैरासमेंट वाला पॉइंट आता ही नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी प्रूव द पॉइंट ऑफ ये क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्टिंग वाला ना। अरे ऐसे तो सर लाइक द थिंग वाज कि मेरे को जो बोला गया था कि अरेस्ट नहीं था डिटेन था, तो उधर वो बट मेरी कोर्ट नॉलेज में के अरेस्ट हुआ ना, कोर्ट में अरेस्ट प्रूव वो हुआ वो। बट वही है, वो मेरी जज से भी बात हुई कि क्योंकि इतना कॉमनली वर्ड अरेस्ट यूज किया गया है राइट, इसलिए हम्म। अरेस्ट नहीं था। बट क्योंकि मैंने मेरी क्लोजिंग में भी सुनेंगे नो अरेस्ट नो अरेस्ट बुक नो एमडीटी लेफ्ट विदाउट अ वार्निंग, मतलब वो बंदा सेल्स तक नहीं आया। तो ना बट आई पीढ़ी तक थिंक नहीं आया सर, उससे दूर वी की नीड टू मेक श्योर कि अगर कोई भी केस कोर्ट में आ रहा है ना, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट बन जानी चाहिए, ये वही इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम एनीथिंग। हमने नहीं किया ना कि ये कोर्ट में हाँ, वो लोग लेके आए। नहीं नहीं बोलो आई ना। एग्रीड, बट उसके बाद बना देनी चाहिए थी, वो कह रहा हूँ कि अब ध्यान यू रखना गेट पड़ेगा। गेट टू वो नो ठीक है पीडी को राइट। मैं बोलूंगा, पूछूंगा हाँ हाँ तुम्हारे साइड से पीडी पे लाइक कुछ तो आप एटलीस्ट बोलोगे ऑन तो रिकॉर्ड अच्छा होगा, रहोगे। ये मैं ऑन बोलूंगा हाँ एक रिकॉर्ड बार। चाहिए ना हमारे पास। वहां पे भी मेंशन होता ना कि लाइक इट वाज ऑफिसर्स कॉल दैट द सस्पेक्ट हैड बीन फ्रीड अवे आफ्टर अ कन्वर्सेशन एंड डिडंट पुट द चार्ज, तो भी चल जाता क्योंकि लाइक कभी कभी ऑफिसर डिसाइड कर सकता है कि भाई मेरे को इसको चार्ज करके जेल सेंटेंस करके ये करना है कि नहीं। वो बट एटलीस्ट डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफिसर हाँ की। वही। हाँ और एक पॉइंट और भी था, अगर जैसे एमडीटी नहीं थी, अगर हम स्टार्टिंग में ही बोल देते कि हमने उसको अरेस्ट नहीं किया, सिंपल केस वहीं खत्म होता मैंने क्योंकि बोला था रिपोर्ट ही नहीं थी। ओपनिंग में बोला था सर, मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में। ओपनिंग में बोला था, बट वो चीज इतना समझ रहे हो बेसिकली हुआ कि अरेस्ट अरेस्ट इतना बोला गया, अरेस्ट एग्जैक्ट वो ठीक लॉस्ट है इट्स वैल्यू। चलो। नहीं वो फैजल को डिनाई तरीके करना से। था वहां पर पॉइंट पे, अरे पता मैं है वो क्या तो हो फैजल गया, चलो डिनाई कोई करता ना। तो वो पॉइंट आता ही नहीं कि वो एंड अरेस्ट हुआ इवन है। फैजल ने जब उसका स्टेटमेंट बताया तो ही पर्टिकुलरली मेंशन कि भाई कि वो वो ओपिनियन दे रहा मेंशन था। भी था, प्लस वो हाँ मेंशन भी था, ये भी उसने मेंशन किया, तो हेलो कोई नहीं। आई थिंक वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड अ आ रही डे है। बिफोर गोइंग इनटू ये ना। तो बहुत लास्ट मोमेंट हुआ ये पूरी चीज। हाँ कोशिश ये, मैं जितना प्रिपेयर कर सकता सर किया मैंने आज। अरे सर आपने तो अच्छा किया, मना थोड़ी ना एक्चुअली करूँ पता है बढ़िया क्या, था, जेन्युइनली लाइक बढ़िया कॉज केस ऑफ था। यू रॉबर्ट इज नॉट सस्पेंडेड राइट नाउ। चलो मैंने तो ये क्या है पीडी की तरफ से मेरे को गाड़ी मिलनी चाहिए रॉबर्ट सर की तरह, चलो ईडीएम की गाड़ी का जुगाड़ हो गया इनका। वो मिल जाएगी, वो दे देंगे, एक्चुअली में खुश होंगे वो। हाँ अरे गाड़ी है क्या बाहर कोई? अरे पानी लेते हैं। आ रहे हम। रॉबर्ट सर कहाँ है, रॉबर्ट सर कहाँ है? पता नहीं, वो लाहौल गाड़ी पता लेके नहीं। चलेगा कोई। पूछो ना एक सेकंड।
है सर। एक फ्रेंडली हो सर पुल ओवर सर। अरे अंगद एक बात बताना, लाल M4 लेने के है। बाद भी भूख नहीं हरी, भूख नहीं मिलती तुम्हारी? अरे यार क्या अरे सुन रायन, मेरे 50,000 ये कर रहे थे। इसको मिले पैसे 50,000 आज इसको वो वाले पहले बैंक पे लेके चल इसको। भाई हेलो, ये लाल है लाल है लाल तो है। अरे BMW निकाल ली, क्या बात निकाल ली भाई। पहले से ही थी तो और कौन सी गाड़ी फर्स्ट चाहिए? कार सर, फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार है मेरी। फर्स्ट कार है, काफी काफी। अभी इसके अभी वो पैशन वाली कार मिलेगी ना इससे। देख ले पैशन वाली गाड़ी कौन सी आ रही है? वो मर्सिडीज। लेकिन लाल क्यों ली तुमने? कहीं सर बालों से मैच कर दें। तुम सर वो रेड एंड ब्लू मेरे फेवरेट कलर है सर। अच्छा लाल है पूरा। आपकी आंखें ब्लू हैं? नहीं सर, वो ये बाल तो कलर करवाया सर। अच्छा नेचुरल ब्लैक है। अरे यार वो आ गया क्या जय शर्मा, वो एक्सक्लूसिव गाड़ी दिखा दी उसने तुम्हें? कबीर जय शर्मा तो क्या नहीं दिखा है दी? एक्सक्लूसिव तो नहीं है, वो दिखा रहे हैं वो रेबेला ही एक थी जो तो है नहीं कोई गाड़ी। रेबला तो नहीं, टोनी किधर है? टोनी आ रखे हैं। वो तो कह रहे वो एल की कस्टम ले लो, मेरे को कोई रेस थोड़ी करनी है एल की कस्टम लगे स्ट्रीट में। गाड़ी है नहीं। बुलाना जरा उसको, टोनी को बुलाना जरा, टोनी से मिलते हैं। चलो तुम नहीं आएगा कोई कॉल कर दे। डेविड सर, वो रॉबर्ट सर को बुलाना जरा। रॉबर्ट सर थोड़ा चैन से थोड़ा आराम कर लें, दो दे देंगे वो आपको पैसे। आगे लो, आगे रॉबर्ट है आगे सामने ये रहो, सामने आलू हो रखा है। ओए रॉबर्ट चलो, मेरे को एक बार इधर ड्रॉप करो। चलो सर, आप ही चला रहे हो, आपको तो चाबी। मैं नहीं चला रहा, हाँ तुम चलाओ। आओ यहाँ पे छोड़ो मुझे इधर, ये आरडीएम। रॉबर्ट सर मिल लो इसके बाद। हाँ मैं मिल रहा हूँ। मसक कली और मटर। आपका आवाज बहुत कम है। आवाज अभी तो बढ़ाया था मैंने, अभी आवाज सही है। अरे उसके डैडी के दोस्त बुला रहे हैं। आउट ऑफ रीच है सर। आउट ऑफ रीच चला गया टोनी। भाई वो आ गया, टर्बो आ गया, पता है? हाँ बोला मेरे को टोनी ने, उसने करवाया। सुन रहे हो? टर्बो आ गया। हेलो सर, स्टॉप कैसे में। हो? कौन सा टर्बो? टर्बो गाड़ी में लगाने वाली टर्बो अपग्रेड। कल नॉस लग आप लेगा जय फिर सर हो गाड़ी। ना? नहीं मैं तो वो कॉल। नहीं, ये सामने मेरे जो खड़े। ये कार्लोस है, छोटा भाई मेरा। अच्छा कार्लोस, अच्छा। आपका नाम सर? मैं पॉल शेल्वी। अरे पॉल भाई, आप ये हुडी कलरफुल हो गए। कल ही पहना था ये, कल ही पहन के रिपेयर कर रहा था। अच्छा ठीक, कैसे हो पॉल? जज आए, जज आए। काम बोलते टर्बो गाड़ी। रॉबर्ट भाई बात सुनिए सर, आप गाड़ी अगद भाई, पीडी की तरफ से छोटी मोटी गाड़ी हो जाती तो। पीढ़ी की तरफ से मैं अपनी तरफ से दिलाता हूँ, कोई सीन नहीं। ये देखो ये वाली कौन सी आओ? ठीक है, एकदम सर गाड़ी से ठीक। अंगद भाई इधर आओ, इधर आओ। सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती है। ये जरूर ले सकते हो, ये औकात में मेरे कैमेरो। अरे आप बाकी मैं आप थोड़ा सा वेट करके ले लोगे तो बताओ, मैं नहीं थोड़ी देर में दिला दूंगा। आप कमेरो का डोनेशन दीजिए, बाकी पीडी से हम जमा कर लेंगे। डन से आप ले लेना मेरे से, ठीक है? ठीक है, बाकी एक दो पीडी वालों को बोलना सस्पेंशन रुकवाइए ऑफिसर की, बड़ा काम। यार वैसे एक बात है। बोलो ना। ये जीता कौन है, मुझे समझ में नहीं आया। देखो मैं बताता हूं, इधर साइड बताओ।
देखो चार्जेस जो क्रिमिनल चार्जेस थे वो सारे आपके हाँ। ड्रॉप हो गए, हाँ। ठीक है। आपको आपकी तरफ का डिसरिस्पेक्ट का चार्ज मिला। एक जो चार्ज नहीं था मेंशन पूरे केस में वो था मेंटल हरासमेंट का और फ्रीडम ऑफ स्पीच। जज ने साला वही चार्ज कर वो करके उसको 10,000 दिलवा। हाँ जी ज़ारा मैम। पागल है क्या? सॉरी अंगद सर, मैं ये कह रही थी आपका अपॉइंटमेंट मिल जाता तो। बस आ रहा हूँ आपके मैं एलएसी आ रहा हूँ। फोन नहीं काटा है आ रहे हो? आओ आओ। हाँ तो थोड़ी देर में आता हूँ, मेरे को 5-10 मिनट ठीक है ठीक है ठीक मैं रॉबर्ट सर से थोड़े पैसे वसूल करता है, बिल्कुल ज्यादा वसूल करके आराम से आओ, मैं यही हूँ। हूँ। ठीक। कोई में कोई होता नहीं। आज भी दिन में जब मैं था तब यही कह रहे थे, कोई वो ट्वीट कर रहे थे लोग बस पे कि बस डाल रहे थे बारी बारी कि कोई पे है नहीं, कोई पे कोई थैंक यू नहीं है, टू कोई पे इनवाइटिंग मैं कोई वो नहीं है, ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। केस मस्त था, हेटर्स मजा आया केस। हैं जज साहब, हेटर्स वो होते मैं हैं भी ना। गया था। जी जी। तब आप था ही कब नहीं कोई गए थे? दिन में। दिन में। अभी कैसा है, हम थोड़ा बाहर गए थे जज साहब, और अभी देखो आज आए हैं पूरा कोई में सब कुछ था आजकल। जज साहब प्रॉब्लम ये हो रही है ना, वो इंग्रेडिएंट की बहुत दिक्कतें आ रही हैं, फार्मर की तरफ से खाना आ नहीं रहा है हमारी तरफ, वो कुछ बन नहीं रहा है, तो हमने स्टेट वालों से बात करी है। तो स्टेट जी। वालों ने बोला है कि सब कुछ सही हो जाएगा, 2-3 दिन का टाइम दो। परसों के दिन हमारे गैस चूल्हे नहीं चल रहे थे अंदर के, तो इसलिए हैं? उस हिसाब से। हाँ चूल्हे ही नहीं चल रहे हैं, गैस नहीं है चूल क्या? हाँ वो चल ही नहीं रहा है, खाना ही नहीं बना पा रहे हम। प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत वो तो सॉल्व हो गई खैर, बट अब इंग्रेडिएंट नहीं है, तेल है तो मसाले नहीं है, सब्जी है तो भाई हमारे पास मछली नहीं है। अब क्या करेंगे बताओ, कैसे बनाएंगे हम? तो वही है कि वैसे करने स्टेट क्या वालों आ से रहे हैं बात हम? चल रही है, हमारे सीईओ जो डक्की साहब है उन्होंने बात आए किया, हमने मेयर आए से भी आए आए डिस्कस आए किया आए है, बात तो उन्होंने करते हैं। बोला एक्शन लेंगे। तो जज साहब वही, अगर ये सब सही हो जाएगा फिर तो कोई फर्स्ट क्लास चलेगा, बस हमें इसी की कमी पड़ रही है बस। जी जी समझ रहे समझ रहे। नहीं ठीक है, समझ रहे। बढ़िया जी बढ़िया। ऐसा बंद तो नहीं होने देंगे जज साहब, ऐसा आप चलिए भरोसा रखें हम उम्मीद पे यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। वो अब कुछ गाड़ी लेंगे कुछ? नहीं नहीं, मैं गाड़ी का शौकीन नहीं, मैं तो ये कबीर को चाहिए थी गाड़ी, स्टेट एम्प्लॉय है, उनके साथ आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं सर? टोनी आ रहे हैं। टोनी है ही नहीं सर ना available? टोनी सर बोल रहे हैं कि उनका कुछ इशू है, ही वोंट बी एबल टू कम। यस। अच्छा हाँ, मेरे मिस्टर पास ईमेल आया जय टोनी से। रिप्लाई नहीं देते। मैं देखता हूँ, कोई नहीं, कल ले लेना तुम। या कल देखता हूँ ठीक है, तुमने कोई भेजी भी है ना कार्तिक से, कबीर से? हाँ मैंने उसको भेजी है, अगर बोल तो रहे थे अगर आने वो 1-2 पहले वीक्स थी में। क्या स्टॉक में कभी? नहीं वो थी नहीं, बट मैंने बहुत टाइम पहले पूछा था, उन्होंने बोला आएगा आरडीएम का स्टॉक जब आएगा ना उसमें आने के है। रेबेला भी बोली अरे थी और वो वो है भी एक एक मैनेजर है, मैं बुलाऊं क्या? एक बंदा है। ये मार्कोस भाई खड़े तो थे इधर, उनको बुला लो, यहीं घूम रहे हूँ। अच्छा नहीं नहीं, वो जय शर्मा मैं बुलाऊं क्या? और मैं बुलाऊं क्या टोनी शर्मा जज सर? ब्रदर्स को मैं जानता ही। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं, जज बाद में साहब बात मेरे वैसे को एक उनसे क्वेश्चन बात पूछा था करनी आपसे। दीजिए। हाँ पूछे। वैसे ना क्लोजिंग में एक एंगर डालने वाला था मैंने जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता, बट सब इनके ही सपोर्टर थे गुल्लू साहब के। एक सेकंड मेरा फोन बजा। अब हम मेयर नहीं हैं। हेलो। हाँ जी मैं बोल। हेलो हाँ जी अंगद सर, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? किंग किंग बीटल। अरे किंग भाई कैसे हो, नंबर नहीं था तुम्हारा। बहुत बढ़िया। अरे कोई बात नहीं, आप एलएस आ रहे हो? आ रहा हूँ थोड़ी, मतलब हाँ थोड़ी एलएस आ जाओ। यस ओके। Yes. Also, just have one more question. जी जैसे businesses जो है वो state owned है, right? अरे हम तो सॉल्व ही कर रहे थे जी वहाँ पे। So एक्सेप्ट आरडीएम। can I take their ये cases छुरी as से well? याद है, कबीर भाई ने मेरी छुरी ली थी एक दिन मेरे से, अच्छा हुआ याद हाँ जी? दिलाया। हाँ Because they're बिजनेस state owned. स्टेट ओन्ड नहीं है, दी प्रॉपर्टीज आर स्टेट ओन्ड। Because they really want me to handle one of the situations. ओह व्हिच वन? LS customers. रॉबर्ट सर, कल आपने बोला था एक एक बारी 35 आर्टिकल की से बात न्यूज़ है कर आपके लो। आई पास, हम कल बता। बेसिस व्हाट द केस इज एंड व्हाट विल बी नीडेड, उसके बेसिस पे बताते हैं। देखना They पड़ेगा। said it's a case against Pitstop. केस अगेंस्ट पिटस्टॉप। Have you heard? You have heard, right? यस, थोड़ा बहुत तो मुझे सिस्टम से पहले। बहुत ज्यादा किडनैपिंग एंड ऑल चल रही, तो वो केस एक्चुअली चल रहा है। We'll have to look at मेरे the को लगा details था of the आज case. I conclusion मिल cannot जाएगा just उसका, say yes. Okay, नहीं है। cool. Just What I'll looking do at is it. I'll ask them the details. I'll submit a petition and then let me know. पूरा वो नहीं दिया पाया। ठीक है, हाँ जी। मेरे को उसी Thank you.
ओके थैंक यू। कोई नहीं कल शायद हो जाए तो कल आप दे देना। मुश्किल है यार, मतलब चल रहा है चलो अभी इसमें Thank you. इन्वेस्टिगेशन, एक बार चल जाए ना फिर आपको स्टेटमेंट देता हूँ चलो पूरी। रॉबर्ट सर, मैं दूसरी ओके ओके इन्वेस्टिगेशन ओके। के लिए जा रहा हूँ। अरे लेकिन अंगद सर गाँव बचा दिया यार आपने। अरे आप पीडी के लिए कुछ भी टेंशन नहीं है, थैंक यू मीन्स अ लॉट। बस अपने हायर्स ये को भी जज बोला। जज साहब को अकेला मत छोड़ो, कोई उठा ले अरे जाएगा ले जाए उनको। भाई। उसने किया। तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त याडी कौन याडी? गुल्लू सेठ। चलो बताएं मैं कौन? ये बोल रहे आप वेट करा रहे थे यार, कैसी वेट करा रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? ये छोड़ो, कावड़े हालो आ जाओ। वो रहे जज साहब, वो रहे। दो लड़के भाई है, ठीक है। जज साहब आपको भी छोड़ दे। Thank you viewers for the subscription. सर गाड़ी ले ली अंगद आपने सर यार। आए हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, मुबारकी हो मुबारकी हो। कैसी लग रही है? पहले से आओ ना। अरे बहुत अच्छी लग रही है, एकदम दूर से बहुत प्यारी लग रही है यार। केले साला केस जीत जाओ, कोशिश तो करेंगे, अभी देखते हैं। अब पहले तो ठीक देखना है है केस ठीक है, उठा पाऊंगा ओके। कि नहीं। आओ आओ। ज़ारा ठीक है, तुम बुड्ढे को घर भेजो, मैं अंगद सर से बात करूँ, यहीं नमस्ते आ मैडम। जाना। हेलो। आप भी मैकेनिक है? हाँ जी। यार ज़ारा, जितनी सुंदर मैकेनिक्स क्यों रखते हो आप? क्या हुआ? इतनी सुंदर मैकेनिक्स। क्यूटी को है इधर वो। लगाते हैं, आप वो यस। करते हैं, रिजाइन देते हैं, आपको यहाँ पे लगा देते हैं हम। तो कर लो किंग, तुम बात कर लो, अगर कुछ नहीं बात नहीं आप करनी थी कर लो, तुमको। नहीं मैं मुझे तो टाइम आराम से कर लगेगा, लूँ। बहुत लंबा कोई बात नहीं, कर लो कोई बात ठीक नहीं, है ठीक। मैं बाद में आ रहा हूँ। अंगद सर चाबी दिखाएं 1 मिनट एलएस इसकी। ओपन तो है ना? दे नहीं सकता, स्टेट हाँ की हाँ गाड़ी है, तो। अच्छा स्टेट की बट है कोई क्या ऐसे वो? मतलब दिक्कत मेरी नहीं है, है, बट पूछो स्टेट की मैकेनिक तरफ को से तो मिलती मना है कर ना। देना। समझ हाँ गया हाँ, समझ वो तो मुझे पता है। ठीक है। आओ। यार ड्रेस पहनने की जरूरत तो नहीं है नजारा, ऐसे ही कर लूं? क्या? हाँ ऐसे ही कर लेना, अभी मैं ठीक इनसे है। बात कर रही हूँ, तुम ठीक थोड़ा है। देख के रहना, ठीक है? मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या हो गया अंगद जी? सर बैठे बैठे बैठे। तो मुझे थैंक यू नीतीश भाई। आपकी राय चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ी दुविधा में। बताइए। हुआ कुछ ऐसा कि पीडी ने हमें बोला था कि हमें एक पीडी व्हीकल्स रिपेयर का एक टेंडर बना मतलब निकला था, जो शहर में 2 मैकेनिक शॉप है, तो किसी एक को देना ऐसे उन्होंने सही नहीं समझा, तो उन्होंने बोला आप अपने कोटेशंस हमें दें, हमारे तरफ से हफ्ते की 15-20 गाड़ियां या मान लो 10-15 गाड़ियां पर हफ्ते आपके पास रिपेयर होने आएंगी, जिसका कोटेशन हमें अच्छा लगेगा और जिसको हम टेंडर देंगे, ठीक है? तो हमने टेंडर अपने तरफ से बना के दे दिया, सामने वालों ने भी दे दिया। काफी टाइम से उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, तो 3-4 दिन पहले की बात है, वीर सर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि पीडी आ जाइए। हम गए, वहाँ मैस्करेट भी थे और उनके पार्टनर लिव भी थे, एंड पीडी ने हमें बोला कि आप दोनों का टेंडर जो है इट इज़ वेरी क्लोज फॉर अस टू डिसाइड, तो आप लोग आपस में बात करके देख लो, इफ यू गाइस वांट टू वर्क टुगेदर।
तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने इस बात पे मैस्करेड को बोला कि साथ काम कर लेते हैं। ठीक है। तो मैस्करेड ने बोला कि ठीक है साथ काम कर लेते हैं। मैंने कहा ऐसा करेंगे, पीडी को बोल देते कि हम साथ काम करेंगे, और या तो जैसे 2 वीक्स तुम कर लो, 2 वीक्स मैं कर लूंगी। तो फर्स्ट 2 वीक्स पीडी की सारी व्हीकल्स आपके पास चली जाएंगी, लेटर हाफ में सारे व्हीकल्स 2 वीक्स मेरे पास आ जाएंगी, एंड दिस वे वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स वर्क आल्सो, एंड both will be able to earn. तो बढ़िया। मैं ज़रा जी आपकी पानी पीजिए। ज़रा जी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? एक सेकंड दीजिए। फिक्सिंग गाइस, फिक्सिंग प्रॉब्लम। एक सेकंड गाइस, फिक्सिंग प्रॉब्लम। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। फिक्स कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। फिक्स कर रहे हैं, फिक्स फिक्स हो रहा है, फिक्स। आलू भाई नहीं, हमारा इंटरनली इधर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और काम था। वी रियली वांटेड टू गो इटली। मैंने फ्लाइट ऑलमोस्ट बुक कर ली थी, मेरे कुछ दोस्त भी उधर थे, साथ में निकलने वाले थे। नहीं जा पाया यार। बट पर्सनली मैंने बोला है, मैंने पर्सनली अपोलोजाइज भी किया, मेरी यूफो भाई से भी बात हुई कि नहीं जा पाया, मतलब बुरा लगा मेरे को, उधर जाना था। इंडियाज बिगेस्ट गेमिंग फेस्टिवल, हाउ कैन आई मिस? क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? सबका हो रहा है क्या? चलो गाइज, क्यू लग गई बड़ी वाली। मिलता हूँ आप लोग से, ठीक है? इट वॉज अ गुड स्ट्रीम। आई शैल कम बैक सून। बाय बाय।